वीरेंद्र, संजय, आशीष, मनीष दंगाएज, मूव कराओ सबको। स्टार्ट कर दे आराम से, ब्रेक लेके आराम से देख। It is only after you have stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. With this, I would like to invite Professor N.P. Pati sir, Director MNIT, to present Dr. R.K. Tyagi sir, Chairman BOG MNIT, with a sapling. Next, I would like to invite President MNIT JA Devraj Solanki sir to present Director MNIT Professor N.P. Padi sir with a sapling. May I now take the privilege of inviting Professor Rakesh Jain sir, Dean Alumni Affairs, to present Engineer Devraj Solanki, President MNIT JA, with a sapling. Next, I would like to invite Associate Dean Dr. Nand Kumar sir to present Convener Alumni Day T.S. Ranawat sir with a sapling. May I have the honor to invite Engineer Rakesh Yadav Bose, General Secretary MNIT JA, to present Professor Rakesh Jain, Dean Alumni Affairs, with a sapling. Next, I would like to invite Pavan Kalla sir to present a sapling to Coordinator Golden Jubilee Batch Gurudev Singh Soi sir. Now, I would like to call Neelmani Bose, a student coordinator, to present a sapling to Dr. Ashish Datta Sarma, Silver Jubilee Batch Coordinator. Next, I would like to call Krishna Varshai Bose, Student Coordinator, to present a sapling to General Secretary Rakesh Yadav Bose. I would like to call Shivagiri Bose, a student coordinator, to present sapling to Dr. Nand Kumar, Associate Dean Alumni Affairs. Done with a beautiful welcome. Now, I would like to call Engineer Rakesh Yadav Bose, General Secretary of MNIT JA, for the further proceedings. Respected dais, now the program starts
for second stage. I request respected Rakesh Jain Bose, Dean Alumni Affairs, for his welcome address. Respected Rakesh Jain Bose. Honorable Chairman, BOG, Dr. R.K. Tyagi Sahab, Professor N.P. Padi Sahab, the Director of our Institute, Ranawat ji, Devraj Solanki ji, Rakesh Yadav ji, Gurudev ji, Ashish Dutt Sharma, who is my student, Golden Jubilee batch and Silver Jubilee batch, alumni. It's my privilege to welcome you in your own institute. Welcome home. We are honored to have you here. You have come after a long period, long duration, and you must have observed a remarkable change in the institute. The institute, which is going to celebrate 60 years in 23, it has transformed from just a college to university. I am also alumni of this institute, 1986 pass out. So I have seen the journey of a college to university from REC to MNIT. So I have witnessed the whole process. It is not a college now at all. During my days, only teaching was there, only UG teaching, only BTech within, I think, 4 branches. Then we had electronics branch. I think during my uh, 250 students intake, total 1,000 students. Now, we have more than 5,000 students, out of which 3,000 are UG undergraduate, around 1,200 postgraduate students, and 800 PhD students. It's a now very vibrant university or institute. It's a university, I should say. We have come a long way from just a college to institute or university. And in this transformation, your role is enormous. And I am very glad to say, during 80s and 90s, we were not part of brain drain. Our alumni contributed to the development story of India. So basically, we are builder of India. So all RECs, alumni, they have built India. When I see as Dean Alumni Affair, and when I connect and I go to the LinkedIn, other websites, I see there are so many chief engineers, IS officers in different departments helping India to grow. So congratulations to all of you for building this nation. Although we have become a better institute, but we want to make it a great institute. We have a long way to go, and the role of alumni is very crucial in this journey.
We have around 33,000 alumni, and if we can connect and engage alumni to the development story of MNIT, we can reach that goal. So I request everyone, Silver Jubilee, Golden Jubilee alumni, to connect with the institute. My deanery will always help you, will request you, will engage you, try to engage you. There are many schemes through which we can connect, various ways we can connect. So with this, I again welcome you in this ground, in this institute, in your own alma mater, and we are our family. So welcome to MNIT family. Thank you. Thank you, respected Rakesh Jain Bose. Now I invite respected Sri Tribhuvan Singh Ranawat Bose, the convener of today's program and vice president of our alumni association, respected Ranawat Bose. कॉलेज के टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में जाते थे तो जेब से फर्रे निकालते थे। आज ये ओपन बुक एग्जाम है तो ओपनली आई कैन यूज माय फर्रा। ऑनरेबल डॉक्टर आर के त्यागी सर, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर MNIT जयपुर, प्रोफेसर NP पाधे सर, Director MNIT and Chairman MNIT Jaipur Alumni Association, Engineer Dev Solanki, the energy members of the Trend Setter Executive Committee of MNIT JA, an executive committee that is devoted for the support of alumni, faculty, students, and the institution at large 24/7. Today marks the Alumni Day celebration of our prestigious institute, Malviya National Institute of Technology, Jaipur, MNIT Jaipur in short, and we have all assembled here today in this lush green campus for the felicitation of the Golden Jubilee batch alumni, that is, students who entered the institute in the year 1972, and also felicitation of the Silver Jubilee batch alumni, that is, engineers who passed out in the year 1997, including architects in the year 1998. During the time you all, these alumni, who are sitting here in traditional colorful sofas, studied here, the institute was Malviya Regional Engineering College, MREC in short. The college was not this lush green then. Nevertheless, it has produced great engineers then, and the accomplishment continues till this day, growing over the years. I welcome the alumni of both the batches. You are welcome, sir. And I believe there could have been no better way to celebrate the Alumni Day than in the benign presence of Honorable Dr. Tyagi, sir. Thanks for sparing your valuable time, Dr. Tyagi. We all welcome you.
The recent years have been full of achievements for the Alumni Association, an association that was lesser known a couple of years ago. Most of these achievements are unprecedented ones, as our association strongly believed in our good intentions, hard work, and cooperation of the fellow alumni in the interest of the institute, its students and alumni. For we had a vision, some clear goals with devotion. I take this opportunity to briefly inform you about the work done by us. Launch of online portal of the Alumni Association. And as I read out my this part, you can witness the proof on the screen behind me. Launch of the online portal of the Alumni Association. Despite several efforts in the past, no fruitful online portal could be established. Our association successfully brought up the portal, which is working efficiently to the expectation of the alumni the world over. This online portal has provided a common platform to all the alumni under the sky to interact and exchange views, ideas, and suggestions. The portal also has the provision of providing an e-card Respected Chairman BOD sir, I am proud to inform you that because of the sincere efforts of the Executive Committee, that the MNIT JA saw its first ever online elections that included voters from across the globe. The number of voters got to almost 3 times than the preceding elections. A blood donation camp is being organized by the association annually. This year, too, we organized a blood donation camp, and due to our sincere efforts, sir, there was a jump in the number of donors this year. 312 units of blood was donated by alumni students, including good number of girls too. The camp was held in the memory of deceased alumni in the past, especially due to COVID-19. To help students in steering their way towards a better career, the Executive Committee introduced an online program, namely Boss Se Baat. The aspirant students and fresh alumni could interact with the expert seniors in any field of specialty on a common platform. Another innovative online program, namely Know Your Alumni, wherein a prominent alumnus having achieved excellence in his/her field shared his/her experience and gave guidance to the other alumni students, was undertaken in coordination with our Tamil Nadu Puducherry chapter. The program was launched globally. The Executive Committee did not fall short in providing scholarships to the needy and eligible students. An amount of rupees 6,43,984 has been given as scholarship, and a loan of rupees 1,98,800 has been disbursed. Needless to say that these figures again are unprecedented ones, sir. The Executive Committee took quick steps in extending medical help to critical alumni in emergency. An amount of rupees 6 lakh was collected by the EC in a short span of about 56 hours for a kidney operation of our alumnus through a contribution from our generous alumni. In another case, an amount of rupees 7,77,000 was collected from the alumni and students and was given as a fixed deposit to the daughter of deceased alumni, late Shri Rajkumar Meena.
Additionally, the association also gave rupees 1 lakh from its own fund. Likewise, an amount of rupees 1 lakh from the association's fund was deposited in the account of family of deceased alumni, late Sri Rajendra Duchania. And used for the sole purpose it was collected for. As a mark of maintaining transparency in the working and to keep all the members, alumni, abreast with the work being done by the Executive Committee of the Alumni Association, the minutes of the regular meetings of Executive Committee are not only uploaded on social media platforms, but also sent to all the live members on their for their information on their personal email. The suggestions, views, comments of the members received there are taken note of and are considered. Needless to say that this procedure has been introduced by the present Executive Committee for the first time. It was for the first time again in the history of MNIT Alumni Association that the association started celebration of its foundation day. The newly introduced event was celebrated for a week in Jaipur, and even at the local chapters of the alumni carried out spectrum of events at the local level. Another innovative activity organized for the first time in the history of the institute by the MNIT JA is Startup Challenge for students and alumni, a welcome step appreciated in all corners. Keeping pace with the fast-changing environment in the market and business, a technical session on artificial intelligence and machine learning, AI and ML, was also organized for the benefit of students and alumni. To spread the canvas of MNIT JA in order to reach out to more and more alumni and rope them in the day-to-day activities and developments, this year local and regional chapters for Madhya Pradesh, Pune, Mumbai, Bihar, Jharkhand, and Delhi NCR. The Executive Committee pursued the institute and got transferred an amount of rupees 65,81,000 that were lying with the institute since long in the form of alumni fee of the students. Respected dais and friends, above are few of many other achievements, and it is evident from these that a lot many unprecedented steps, activities have been taken up and carried out by the Alumni Association in a short span of time. These activities have been welcomed, acknowledged, and applauded by the alumni at large to an extent that we have risen hope in the market of the alumni to a great extent. Testimony to this fact is the steep rise in the number of new life members of alumni by 711, an unprecedented figure again, a rise by 25%. To live up to these expectations, we have pledged that we will leave no stone unturned to glorify our institute and to take it to the top level with the cooperation from all. But not without the full and proactive cooperation of the institute, sir. And when I say this, I am reminded of our association's first meeting with the present director MNIT on 17th day of his joining this prestigious institute, sir. During the discussion on various issues, sir had expressed his desire to green up the empty patches that he had noticed in the campus in a systematic manner.
I, having served in the Department of Environment, Government of Rajasthan, as Secretary to the State Level Expert Appraisal Committee for Environment, SEAC in short, the committee that is responsible for clearances to large projects from an environmental angle, and now retired, I was delighted to take up this plantation work. Dynamic General Secretary with our team took the round of the campus couple of times and made some proposals too for plantation during the monsoon period. But despite our sincere efforts and pursuance through correspondence, emails, and even personal meetings with the then Dean PND, we could not get a single patch of land for plantation, and the rainy season passed away. We still fail to understand this indifferent attitude. We expect and hope to get proper response from the concerning officials for smooth cooperation in achieving our targets and goals. It is worth stating here that in the past, the association had carried out extensive plantation in the campus at Phal Vatika, Pushpa Vatika, Aushadhi Vatika, and the D Block Park in Staff Colony, where 250 saplings of Ashoka tree were planted. At the end, I would like to thank all our alumni spread across globe for their effective cooperation with the executive committee as and when needed. I also request you all to sign up, log in at our official web portal, that is mnitm.org, and strengthen the base for betterment of our alma mater. Thank you. Now, I request respected Devraj Solanki Bose, the President of our Alumni Association, for his address. Respected Solanki Bose. जो साफे खड़े हैं वो आके बैठ जाए, जो साफे खड़े हैं वो आके बैठ जाए, और जो चल रहे हैं वो भी बैठ जाए। कैसा लग रहा है? अरे जोश नहीं आया, कैसा लग रहा है? ये बात ऑनरेबल चेयरमैन बीओजी डॉक्टर त्यागी सर, हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर एनपी पाड़ी सर, हमारे लवली डीन, हमारे सीनियर प्रोफेसर राकेश जैन बॉस, इस प्रोग्राम के, इस इवेंट के कन्वीनर हमारे उदयपुर मेवाड़ के राणा, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री इंजीनियर टीएस राणावत बॉस, हमारे गोल्डन जुबली बैच के सोइन बॉस, और सिल्वर जुबली बैच के आशीष जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर भी हैं, और हमारे हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड जनरल सेक्रेटरी राकेश जी। इतना लंबा भाषण था हमारे बॉस का, थक गए होंगे कि ऊब गए होंगे। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं दूंगा, बहुत छोटी सी 2-3 जानकारियां दूंगा। एक तो मैं हमारे चेयरमैन सर से ये निवेदन करना चाहूँगा, सर हम पिछले 2-3 सालों से प्रयासरत हैं कि एक एलुमनी हाउस हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करें एलुमनी के सपोर्ट से, बट लैंड का कोई इशू है सर, वो अभी तक हमें अलॉट नहीं हो पाई है, या हमें बताया नहीं गया है कि ये लैंड आपके एलुमनी हाउस के लिए होगी। हमारे बहुत से एलम्स जो बाहर से आते हैं, उनका ये इच्छा होती है दिल में कि वो अपने कॉलेज कैंपस में रुकें, और यहाँ रुकने की व्यवस्था थोड़ी सी टाइट रहती है। तो थैंक यू, हम चाहते हैं सर कि इस इशू को थोड़ा जल्दी रिजॉल्व कर दें, लैंड आइडेंटिफाई करके हमें बता दें तो हम एलुमनी हाउस का कंस्ट्रक्शन जल्दी से जल्दी चालू कर दें सर। दूसरा, मैं राकेश यादव से रिक्वेस्ट करूंगा, हम ग्लोबल एलुमनी मीट करने जा रहे हैं जनवरी में 28 और 29 जनवरी को हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी के अंदर। तो मैं राकेश से रिक्वेस्ट करूंगा, चेयरमैन सर को
इनवाइट करने के लिए आगे से। अभी बॉस ने जैसा बताया, राणावत बॉस ने, हमने पोर्टल बना रखा है और पोर्टल बड़ा अच्छा चल रहा है। बॉस ने कुछ 2-3 चीज़ें और बताई थी कि हमारे किसी एलम की किडनी की कोई ट्रांसप्लांट का इशू था, तो हमने पोर्टल के ऊपर फंड रेजिंग की रिक्वेस्ट डाली और विद इन नो टाइम 56 घंटा, जैसे बॉस ने बताया, 6 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। हमारे एलुमनाई कितने जेनरस हैं, कितने अपने साथियों के लिए काम करने के लिए। इसी पोर्टल पे बहुत सी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं। इसी पोर्टल पे हमने जो हमारा ग्लोबल मीट है हैदराबाद में, उसका हमने इवेंट क्रिएट किया हुआ है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आप ग्लोबल मीट में आए हैदराबाद में। देश विदेश से सभी लोग आएंगे, आपके बैच के भी आएंगे और सीनियर्स भी आएंगे, जूनियर्स भी आएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि कितनी MNIT से निकलने के बाद में, MREC से निकलने के बाद में हमारे साथी इंजीनियर्स किस किस पोजीशन पे, किस किस लेवल पे वर्क कर रहे हैं। दूसरा, नेटवर्किंग का ज़माना है आजकल, है ना। कोविड काल में सबको ये पता लगा कि गिव बैक टू सोसाइटी, गिव बैक टू योर एल्मा मैटर। अब ज़माना इसी चीज़ का रह गया है। तो हमने जो पोर्टल बनाया है वो इसी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है, आपकी नेटवर्किंग बनाता है और आपको लगता है जैसे आप लोगों ने पहले सपोर्ट किया, हमारे किसी एलम की कोई प्रॉब्लम हुई, आपने सपोर्ट किया, उसमें फिनेंशियली सपोर्ट किया, उस तरह से हम गिव बैक टू सोसाइटी वाले सिस्टम को भी पूरा कर सकते हैं। अब और ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि 2 डायरेक्टर सर का और हमारे चेयरमैन सर के भी उद्बोधन होंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय अ लॉट। Thank you, respected boss. Now I invite our chief of the institute, our director, respected Professor N.P. Padi sir, for his address, please. Respected director, sir. It's fine? Yeah. A very good morning to all of you. It's quite extremely happy and being part of this wonderful MNIT family. And just to say, first of all, Dr. R.K. Tyagi, Chairman, Board of Governors, MNIT Jaipur. And then we had actually Engineer Devraj Solanki, President MNIT JA. Then we have actually Engineer T.S. Ranabat, Convener Alumni Day. Then we have actually Professor Rakesh Jain, Dean Alumni Affairs, MNIT Jaipur. Then we have actually Golden Jubilee Batch Coordinator. We met for the first time, and Gurudev Singh Soni ji, I'm really extremely a close friend of you now. So I think he represents not only an individual, but he's representing you all today in this evening, in this morning event. Then we have Rakesh Yadav, a very taskmaster, very sincere, wonderful person. Then we have a Silver Jubilee Batch Coordinator. I haven't met you in personal one-to-one, but Dr. Ashish Dutt Sharma. Nice meeting. Hope you are also representing all 25 years. Great. So then finally we have Dr. Nand Kumar, Associate Dean Alumni Affairs. What I wanted to tell you today, probably I go with statement as President of MNIT JA. You'll be very surprised, you know, when I joined this institution on 16th of February 2022, the first meeting when a group of people came to my office, and these two are witness, both Rakesh Yadav ji as well as Devraj Solanki ji, that they want to have executive committee, and that says, sir, you are our
So today I am holding one of the toughest position, being the head of the institution at MNIT as well as leading chairman MNIT JA. So whatever we are doing today, so I am kind of a part of both the sides. जैसे शादी होता है ना, sometime you become a person belongs to both लड़की वाले के होते हैं और लड़का वाले के होते हैं. So I am now holding that point today. So anything that Solanki ji has said to MNIT, it is perhaps actually behalf of MNIT JA family and also to MNIT. So that means I will be giving you confidence that MNIT Jaipur is an institution of high standard and the extent support will be carried out to make sure there is a wonderful relation. And without this, nothing is possible. Today, whatever we are is because of you. And a huge round of applause to all these guests present today. And I also like to welcome not only the Golden Jubilee batch as well as Silver Jubilee batch, but I also wish to invite their spouse, their family members, whoever here, you are our guest today. So once again, welcome you all to this wonderful event that you're going to celebrate the whole day. Now, coming back to as an institution, as you know, the institute has taken a different shape over a period of time, almost for last 6 decades. And it is not that we have not contributed to the nation for last 60 years. We have significantly contributed to this nation for last 60 years. And now it is high time, because sometime you all realize that even to stand on your own position, on a rolling drum, you need to run. And that is the biggest challenge in front of us. We need to keep on running to maintain your own position, forget growing and going up. So we need support from all the alumni wholeheartedly to make this institution better and better and motivate us to run faster than in what speed we are running today. And now one important thing what I like to mention here, I could see there's a lot of happiness in front of you, and especially I could see a couple of madams, they keep on smiling for a long time. So I think they are very proud that their brother is here, or maybe, their friends are here. I think this is one of the wonderful days that you can cherish for a very long time to go. And what a wonderful combination. I do not know when it started, but having a celebration for 25 and 50 together, and that is wonderful match, I can say. You talk to the younger minds and also you share your wonderful experiences to others. But none of them actually look like they have completed 50 years. I don't know, actually, it may be wrong. I look actually the oldest person in this whole crowd. You all people look so young and so dynamic. So I think it's a great to see that, okay? So please enjoy your day and give us an opportunity to host you the best that we can do for you and make your stay very comfortable. Now, one important thing, it is also an opportunity for all of us to reflect on the history of our institute and to celebrate for our future. As you know that we are committed to continuously work hard to grow from time to time. Students of our institutions are doing very well. So I'd like to share a couple of interesting success stories, and you'll be very happy to know that. Now, this institution has recently introduced identifying the best teachers, those who have contributed significantly in the past. And fortunately, this award has been given on 5th of September, and this will continue forever. And now we are trying hard to motivate some of our students and colleagues, those who are also contributing towards patenting, innovation, and creating research hubs in the departments and cells.
Now, yesterday, we had an alumnus award ceremony, and you are all happy to know that this program really went very well. But we request all of you that actually please try to nominate or get nominated for future award ceremonies to make this event more successful. Now, in the placement, our undergraduate students are doing so well, so well. I have been told by the professor in charge placement that the salary of each graduate student compared to 21 to 22. So that's a great news and a wonderful round of applause. And the postgraduate student placement, which happened to be a challenge for us throughout, because as you know, undergraduate students are quickly placed and very well placed, whereas for the postgraduate students, they are, they are placed actually, but not so well as with our undergraduate students. But this year, the placement has been improved by more than 100% for postgraduate students. Now, there is one more challenge, You as alumni, all the time you wish to look at your institute keep on growing and rising. Am I right? So you all expect that to happen. And NRF is one of the ranking parameter of India, where if you do well, then probably you all will be proud of this. So now we are working day and night to make sure that this institute rise step by step, and I assure you, within 5 years' time, this institution will be within top 20 of the nation for sure. And this is a moderate target. I mean, we will still work hard to be a single digit, but we assure you that it will be within 20. And it has to be one of the top 3 NIT in this country. And that is the next dream I do have in my mind. Now, one parameter, I thought this is one of the wonderful forum for me to share. If you look at because I was comparing among the NITs, where do we stand, We are best in all parameters and categories and vectors, excluding one component, and that component was perception. Because of perception, the score is so low. Even we are doing number 1 NIT in this country, we have been placed actually 4, 5, 6. So I request to all my alumni, please go and help us by spreading the information that MNIT is an institution of high standard, and we should not lose. If you say I'm not doing or we are not doing good research, losing mark is explained with perception. I could see, I have visited almost all the institutions in this country, but I have never seen an institution of standard. MNIT Jaipur may be at lower ranking in NRF, but as an institution, it is the number 1 in this country for sure. Now, I like to go one more step. With the raw data of admission of 2020 summer, you all will be happy to know MNIT Jaipur attracted the best graduates of this country in comparison to all other MNITs. This is a good story, and we will keep on doing it for a very long time. Now, there is also another dream. We cannot limit ourselves just into a national level competition. We have to go as a global as quickly as possible. Though our ranking may not be very significant, but we are trying hard to participate in QS global ranking. Let us see where do we stand, not only within nation, but also globally. I am very sure, I request this 25-year batch to help me to go global and make sure that we also get some standing there also. Now, one more step. Recently, in the Board of Governors, actually, to attract wonderful fellow colleagues and guest faculties to come and help us. So we are introducing a scheme of, we have already introduced, it is in place. So very shortly, many professionals will be coming to the institution as adjunct faculty. So it may so happen
we are not able to reach potential adjunct faculties, those who are sitting in this small gathering also. So during your free time, see to that, those who are having, kind of time to spare and help us. So please let us know through Solanki ji, and please also help me out saying that these are the 5 people who can be, part of this event, and we'll see to that how they can be accommodated. Now there is one more thing, that is the vision of our chairman, professor of practice. He wishes that we need to have a reasonable number of professor of practice in this institution, and probably these are the alumni who can certainly be, can play an important role in helping us to establish that. The last but not the least, today we do have very serious pressure in running the institution because the support from government is keep on reducing. And we need to survive our own. That is the trend setter, okay? So only those institutions will survive in this country, those who are able to be self-sustainable in nature, or we can generate some. So we are motivating all our younger faculty colleagues, research projects, so that the laboratory development can happen with time without waiting for government to contribute. And you all will be happy to know, this year the research and development grant of MNIT Jaipur has been doubled compared to the last year grant. So one huge round of applause to all the faculty colleagues, those are working day and night. But nevertheless, we also need your support to grow to develop our research laboratories, basic lab facility that you have studied before, let's say 46 years, and the condition need to be improved. So probably a kind of a unified approach with MNIT and alumni can be carried out to develop the standard of the laboratories of our undergraduate students. And you also will be happy to know that almost close to more than 200 crore R&D grants are expected to arrive in this institution in next couple of months. So that will be a huge story and history, and if it happens, we'll certainly share to the alumni and you can communicate to all the members. I have a small pity story from my side personally, Solanki ji, if you agree. When we conduct any meeting, I think Yadav ji and Solanki ji are working so hard to make the meeting very successful. And we follow it up, we mail it. But the attendance is not that significant the way we expect, okay? So I request all of you, at least this batch must commit that whenever there is a meeting, they have to attend, and even if they are not able to attend due to some emergency, they can communicate so that we can announce on floor that these gentlemen, these bosses are not able to join because of certain reasons. So that will strengthen the participation factor, and it also shows that we are united. So probably that is one of the interesting things to be done. And regarding the global alumni function, I am very happy that you are also equally parallelly thinking bigger and bigger, and I am very confident the perception factor of MNIT Jaipur will certainly improve, and over a period of time, in next 2-3 years time, we will never disappoint you and will make you more proud alumni over a period of time to grow. Now coming back to the administrative support of this institution regarding plantation, regarding construction. Regarding plantation, I can assure you now itself, you please do it from tomorrow itself. In public, I am just giving you the announcement. But regarding construction, this is an administrative process. Probably the chairman staff will be able to comment on this issue. But with this high note, I thank you once again, all of you, to be part of this event. Many seniors, seems to me there are more than 50 years of experience here. And namaskar from my side, those who are very, very senior. And welcome you all to this event with your families. And once again repeat, being the bridge between MNIT and MNIT JA, I will make sure that alumni have their confidence on this institution much better over a period of time, and they will feel more attached to this institution in time to come. Thank you very much. Jai Hind.
Dr. R.K. Tyagi ji. Dr. R.K. Tyagi is the Chairman, Board of Governor, MNIT Jaipur. He has served as Chairman of Hindustan Aeronautics Limited. He also worked as CMD of Pavanans Helicopters Limited. He did his BE in Electronics and Communication from IIT Roorkee in 1975. He holds different board positions in various companies. He also served as President of Aeronautical Society of India. He continues to play an influential role as strategy advisor in aerospace, defense and energy sectors. I request our Chairman BOG, Dr. R.K. Tyagi sir, for his address, please. Respected Chairman BOG. Respected Golden Jubilee batch, your families, and Shri Gurudev Singh ji, who has very nicely coordinated this Golden Jubilee batch here. And also a very warm welcome to the Silver Jubilee batch, very effectively coordinated by Dr. Ashish Dutt Sharma, am I right? Excellent. इनफैक्ट आपको किसी ने बताया कि आप सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं. इनफैक्ट अगर कोई बाहर से वॉक इन करेगा तो उसे लगेगा कि ये किसी बहुत बड़े राजा महाराजा की शादी का समारोह है. बढ़िया. नहीं, देर तो अभी तो शुरुआत है साहब. अभी तो देखो, अभी तो हमें कोई पिटने वाला नहीं है. देखो, सुंदरता की तारीफ एक नेचुरल चीज होती है. इफ दे आर हैंडसम एंड लुकिंग स्मार्ट, दे आर, एंड वी हैव टू एक्नॉलेज इट. इनफैक्ट गुरुदेव सिंह जी, आप 60 बैच वालों को भी क्यों नहीं बुलाते? What name we give to the people who have completed 60 years, Padi sir? Diamond Jubilee बैच. तो अगली बार जो है डायमंड जुबली बैच को भी बुलाइए. दे विल बी फर्दर इंस्पायरेशन. और एक चीज और जो मैं समझता हूं कि 50 और 25 के बीच में गैप काफी लंबा हो जाता है. तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट ए गैदरिंग ऑफ 40 years of batch also? उसका भी कुछ नाम दीजिए. पर्ल बैच और दैट काइंड ऑफ थिंग. कोई जरूरी नहीं कि आप 25 साल पूरे करें, उसके बाद 25 साल आने की इंतजार करें अपने इंस्टीट्यूशन में, तो वो भी एक कर सकते हैं. 60 years बैच, 50 years, 40 years and 25 years. That is one thing we can do. और हमारे बहुत डायनेमिक लीडर्स हैं एलुमनी एसोसिएशन के. देवराज सोलंकी जी, रानावत जी, राकेश यादव. यू आर डूइंग एक्सीलेंट. इनफैक्ट आई वाज हियर last year also, and I am very happy to see that lot of good changes have taken place. Especially आपने जो ये ऐप इंट्रोड्यूस किया है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है. In fact, any idea what is the alumni strength of MNIT? कितने लोग होंगे alumni? पास आउट कितने होंगे अपने इंस्टीट्यूशन के? Any quick guesses? ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई नीलामी लग रही हो, बढ़ती जा रही. देखो, मुझे बताया गया कि करीब 33,000 हमारे पास आउट्स हैं जो एक्टिव हैं. ओके. अभी मैं कल डायरेक्टर साहब के साथ शेयर कर रहा था, अभी सोलंकी जी के साथ भी, कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के अगर 33,000 लोग हैं जो कि आज की डेट में हिंदुस्तान में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और दुनिया की अलग अलग कंपनियों में भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो पॉसिबली किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है अगर वो सारे लोग कनेक्टेड हों.
In fact, only yesterday I shared with them a alumni connect which has been developed by IIT Roorkee recently. They have 40,000 people and they have developed a wonderful app in a sense, like if I go to New Jersey tomorrow, my real location will be known to all the alumni in New Jersey, and I will also know who are the people from my batch who are living there in New Jersey. That is advantage one. दूसरी चीज देखो, आप लोगों ने तो लाइफ में बहुत तरक्की की, आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट किए, तो एक जिम्मेदारी आप लोगों की ये बनती है कि जो यंगस्टर्स हैं उनको प्लेसमेंट्स में मदद करें और उनको अगर कोई लाइफ की समस्याएं हो तो उसको दूर करें। लेकिन वो तब हो सकता है जबकि वो लोग आपको अप्रोच कर पाए। तो ऐप ऐसा जिसमें कि यंगस्टर्स आपको अप्रोच करके सलाहें भी मांग सकें, आपसे करियर प्रोग्रेशन में भी मदद ले सकें, उस तरीके से आप कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। एलुमनाई हाउस, एक्सेलेंट कॉन्सेप्ट। एंड अभी देखो, सोलंकी जी ने बोला डायरेक्टर साहब उसमें कुछ करेंगे, डायरेक्टर साहब ने बोला चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कुछ करेंगे। अब मैं आगे किसको बोलूं कि वो इसमें कुछ मदद करेंगे? आप लोग। देखो, आप लोग तो बहुत एकम्पलिश्ड लोग हैं और हम लोग लाइफ की जिस स्टेज पे हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने अपने लिए बहुत कुछ किया, हमने अपने परिवार और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया। तो अब टाइम है कि हम अपने पेरेंट्स की याद में कुछ करें जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। हम अपने इंस्टीट्यूशन जिसने हमें इस लायक बनाया कि हम लोग आज बड़े बड़े पदों पे विराजमान हैं, तो शायद ये टाइम है जबकि आप थोड़ा सा अपने इंस्टीट्यूशन को वापस देने की सोच सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ देवराज जी, जहाँ तक फॉर्मेलिटीज है वो तो हम जमीन भी ढूंढ लेंगे, एलुमनाई हाउस भी बना लेंगे, लेकिन उसमें आप इस बैच का एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन लीजिए ताकि हम हिस्ट्री को कह सकें कि जब हम लोग 25 दिसंबर 2022 को इकट्ठे हुए थे तो उस टाइम पे जो हमारे गोल्डन जुबली बैच और सिल्वर जुबली बैच ने हमें प्रेरणा दी और सहायता दी, उससे हम लोग ये एलुमनाई हाउस बना पाते हैं। लेट अस वर्क ऑन दैट डायरेक्शन। और एक चीज और है कि जैसे देवराज जी ने बोला कि जब एलुमनाई यहाँ आते हैं तो शायद ठहरने वहरने में कुछ कोशिश होती है, नंबर ऑफ रूम्स। मैं एक्चुअली डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा वो रूम्स तो आप एकदम बढ़ाइए। देखो, यू हैव ए राइट ऑन MNIT। आप लोग कभी भी यहाँ आना चाहेंगे विद फैमिली, वी शुड बी वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। ओके, तो कुछ ऐसा आप इनको वो रूम तो नहीं दे पाएंगे जिसमें ये तब रहते थे जबकि ये स्टूडेंट लाइफ में थे, लेकिन ऐसा है कि कुछ रूम्स आप शायद एलुमनाइज के लिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हॉस्टल में ही करिए ताकि उनको वो हॉस्टल वाली फील भी आए और उनको लगे कि भाई पुराने दिन वापस आ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। और लास्ट ईयर हम लोगों ने एक चीज और शुरू की थी, अपने डिस्टिंग्विश्ड एलुमनाइज को रिकॉग्नाइज करने का सिस्टम। लास्ट ईयर हमने शुरू किया तो मोस्टली हियर एंड से पे सिलेक्शंस हुए थे। इस साल उसको थोड़ा इंप्रूव किया और जैसे कि पादी साहब ने बोला 140 नॉमिनेशंस केम एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव मेड सम सिलेक्शंस। It is like a process which needs a continuous improvement. I was sharing with some people who said कि भाई और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको कि हमें अवार्ड देना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इनफैक्ट आप जितने भी लोग यहाँ पे पगड़ी पहने हुए बैठे हैं, आप सब अवार्ड्स के उत्तराधिकारी हैं, मिलने चाहिए। उसके लिए आपको नॉमिनेशंस ज्यादा से ज्यादा करने होंगे। तो अगली बार जब हम लोग ये अवार्ड्स डिसाइड करते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कम से कम 1400 नॉमिनेशंस आप लोगों में से आने चाहिए, उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमें और देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया।
ग्लोबल रैंकिंग, परसेप्शन, ये सब चीज़ें तो अपने आप होंगी अगर आप लोग अपने संस्थान के लिए ब्लेसिंग्स और इंस्पायरेशंस के स्रोत बने रहेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आइए और बार बार आइए, और आप में से कुछ लोग जो अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बन के आइए। पिछले कुछ सालों में चीजें बहुत तेजी से बदली हैं। इवन सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है कहां पे है? सबसे बड़ा चैलेंज आज की डेट में हमारी फैकल्टी के लिए है। जिस तरह से चीजें बदली हैं, टेक्नोलॉजीज बदली हैं, हमारे फैकल्टी भी अगर हम लोग कुछ स्टेप्स नहीं लेंगे तो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होंगे। आप लोगों से दो रिक्वेस्ट है। एक तो आप में से जो लोग आके हमारे यहाँ एडजंक्ट फैकल्टी बनना चाहते हैं, 2-3 दिन के लिए आइए, अपनी फील्ड के बारे में बताइए एंड अपडेट स्टूडेंट्स, गिव देम मोटिवेशन। और दूसरी चीज, आप में से काफी लोग होंगे जो अपनी कंपनीज में काफी इन्फ्लुएंशियल होंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे 270 फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनके लिए कोई ऐसी स्कीम बनाएं कि वो भी आके आपके ऑर्गेनाइजेशंस में 4 या 5 दिन रह सकें और देख सके कि इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी किधर जा रही है। तो ऐसा आप लोग कुछ करेंगे? कुछ प्लान कर सकते हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से एटलीस्ट कुछ लोग एक ग्रुप बना के कुछ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बने, कुछ एडजंक्ट फैकल्टी बने, और कुछ लोग हमें स्लॉट्स दें जहां पे कि हम अपने गुरुजनों को आप लोगों के पास 3-4 दिन के लिए भेज सकें, वो रह सकें और आप लोगों के साथ में एक एक्सपोजर ले सकें। तो ये कुछ आइडियाज हैं। तो पादी साहब, देवराज साहब, ऑल एस्टीम्ड colleagues on the dais, great appreciations and thanks to you। और पादी साहब, सिर्फ एक चीज आपने जो बोला ना, मेरा रोल बहुत डिफिकल्ट है। मैं इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी हूँ और मैं एलुमनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। ये तो गॉड सेंट सिचुएशन है। आप दो चीजों के प्रेसिडेंट हैं तो आपके लिए तो इवन स्काई इज नॉट द लिमिट, आप जो भी चाहेंगे वो कर लेंगे। एंड also my appreciation and thanks to all the youngsters who have made these wonderful arrangements, and I will like to convey my thanks and gratitude to all of this organizing team through Pratish Sharma and Shruti Singh, who started this program by comparing it. Thank you very much. Thank you, respected Chairman, sir. You appreciated our web portal for the benefit of our alma mater. I just want to share brief information. Out of about 3,000 alumni, only 40,112 are our life member registered on the portal. Out of more than 14,000, only 8,663 are active users, and only 5,262 are those who have completed their profile, submitted their email and mobile numbers through which we are able to communicate them. I request you, all the remaining members, kindly register on the portal, submit your personal details so that we can communicate with you. Also, I request the institute to provide us the details of the students so that we can upload all the details of the students on that web portal, and the students can directly interact with the alumni for their benefit of and whatever they want. Last year, our web portal was launched by the then director, Professor A.P.S. Rathod Bose, and our senior, Sri Mahavir Punya Bose. Within 1 year, we are able to reach many, many more alumni. Now, to start the felicitation process, the Golden Jubilee Batch Coordinator, Sri Gurdev Singh Soin Bose. He is a well-known name in the railways and various metro organizations. During the last 35 years, he has played a frontline role in ensuring that all new mail line and metro trains in the country have the most modern technology, and most of the equipment on these trains are made in India
under technology transfer, every electric locomotive you see on the rail network today in the country is built technology that Gurudev brought from ABB in the 90s. He has also been an accomplished and popular radio and TV commentator on cricket and hockey. He has done over 75 one-day international and a large number of test matches, as well as the cricket and hockey World Cups in 1981 and 1987. And the 9th Asian Games held in Delhi in 1982. He has shared the mic with the likes of Raj Singh Dungarpur, Nawab Patudi, and Harsh Bhogle. In fact, he started his broadcasting in cricket, hockey, and basketball from this college sports field. We also see him doing live commentary on News 24 channel on Republic Day parade every year. Now, since last 8 years, he is making a voluntary contribution to the society in the field of education for children and women from the backward and underprivileged sections of the society. He is running a historic and prominent educational institute known as Geeta Bajaj Bal Mandir in Jaipur. I request respected Gurudev Singh Sohan Bose, the coordinator of Golden Jubilee Batch, for his brief address and then starting the felicitation of Golden Jubilee Batch. Respected Gurudev Singh Sohan Bose. Yes. प्रोफेशनल होने की बीमारी ये होती है कि पहला काम इसको इस तरह से कि आप परेशान हो के भाग नहीं। आदरणीय डॉक्टर त्यागी जी, मैं डिजिग्नेशंस न बोलूं तो माफी है। आपने कहा इनफॉर्मल होके हम बात करें। आदरणीय पाठी जी, मेरे MNIT JAA के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, संयोजक सब छोटे भाई हैं, तो मैं आपको उसी तरह से एड्रेस कर सकता हूं। सोलंकी जी, राणावत जी, राकेश जैन साहब और यहाँ बैठे समस्त मेरे साथी, मेरी भाभियां और सिल्वर जुबली के हमारे छोटे भाई बंधु, मैं कह नहीं सकता कि यहाँ खड़े होते समय किस तरह की भावनाएं, किस तरह के ख्याल दिमाग में घूम रहे हैं। मैं पॉइंट्स लिख के लाया था, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता उन पॉइंट्स को देखूं या मैं अपने मन की बात आपसे कहूं। वो जब यहाँ से गए थे तो एक सन 77 में मैं गया था, कुछ लोग बाद में, लेकिन एक और इसी से शुरू करूं तो ठीक है। जब मुड़ के देखा था तो ये एहसास था कि हम 100 से ज़्यादा लड़के जो 16 साल की उम्र में या 17 साल की उम्र में यहाँ आए थे देश के अलग अलग हिस्सों से। वी केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट थॉट प्रोसेसेस, फूड हैबिट्स, ये सब लेकर के हम आए थे। हम में से कुछ मलेशिया और मॉरिशस से भी आए थे उस समय, वो आज नहीं है यहाँ पे, लेकिन उनमें से एक दिल्ली में आके मिलते रहे हैं हमको, मलेशिया वाले। तो जब जा रहे थे तो दो चीज़ें मुझे याद हैं कि एक तो एक शेर दिमाग में आया था कि शायद वो शायर थे अख्तर सईद खां, उन्होंने कहा था कि कितनी यादें, कितने किस्से नक्श हैं इन दीवारों पर, कितनी यादें, कितने किस्से नक्श हैं इन दीवारों पर, चलते चलते देख लें मुड़कर
कौन यहाँ फिर आएगा। लेकिन इतनी मोहब्बत है यहाँ इस मिट्टी में, इस परिसर में, इस कैंपस में कि डॉक्टर साहब, पादी साहब, बहुत मुश्किल है इससे दूर रह पाना। कम से कम मैं अपने लिए कहता हूँ कि मैं जयपुर की पैदाइश हूँ, बसा दिल्ली में, लेकिन जब भी यहाँ आता था तो साइलेंटली मैं किसी को बताए गाड़ी लेके या स्कूटर लेके कैंपस का एक चक्कर चुपचाप लगा के यहाँ पे एक प्रणाम करके और निकल जाता था। तो वो बातें हैं, बहुत सारे ख्याल आते हैं। लेकिन मैं, और वक्त की बात आपने कही, तो वक्त की बात तो ये होती है कि वक्त के 3 स्टेजेस बताते हैं। एक वो होता है जो वक्त इतनी तेजी से निकल जाता है कि आप उसके साथ to keep pace with it is very difficult. And those were the years when we left this campus. We all got involved with our respective jobs. वो कहते हैं नून तेल लकड़ी, और उसके बाद विवाह हो गए, शादियां हो गई, परिवार की जिम्मेदारियां हो गई, कुछ देश की जिम्मेदारियां हो गई, समाज को संभालना. Contribution to the nation was the prime concern. Contribution for the family was the second concern. And we went into all of that, and time spiraled by really quickly. तो पहले 25 साल बाद जब हम यहाँ आए थे 2002 या 2003 में, तो मुझे याद है कि हम शायद 70, 75 या 80 लोग थे पर आए थे. आज जब हम आए हैं तो हम 50 भी नहीं आ पाए हैं. कुछ को तो वक्त लील गया, वो चले गए. उनको मैं नमन करता हूँ, अपने उन दोस्तों की याद को यहाँ आज खड़े होके, और उनकी याददाश्त तो हमेशा एक खुशबू की तरह हमारे साथ रहेगी. लेकिन एक अजीब सा एहसास होता है कि जिस जगह पे आकर हमने अपने घर से पहली बार, घर से बाहर ज़्यादातर लोगों ने कदम रखा था, हॉस्टल में आकर के बैठ गए, और ये कुछ ने शहर में एक कमरा लेकर के पास में और अपनी पढ़ाई की. वो अजीब अजीब तरह की बातें, अजीब बोलियां, भाषा, पर बहुत जल्दी 3-4 महीने में ही कुछ ऐसा कमाल होता है हॉस्टल लाइफ का या कैंपस लाइफ का कि इतनी जल्दी हम लोग एमलगमेट हो गए थे एक दूसरे से. हर साल जैसे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आए तो नए दोस्त बनते, नई बातें समझ में आती थी, और वो एक अलग एहसास होता था, उसका एक अलग मज़ा था. आज मैं ये कहने से शुरू करूँगा कि आप सबका बहुत आभारी है हमारा बैच, मेरे साथी, जिनकी तरफ से मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा, हमें याद किया, और इस लायक भी समझा. आपकी बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी है कि हम कुछ इस संस्था को वापस दे सकें. जो मैं अपने दोस्तों से दिल्ली में एलुमनाई एसोसिएशन में 70s में मैंने और मेरे कुछ साथियों ने NTPC ज्वाइन किया था, तो वहाँ जब दिल्ली की एलुमनाई एसोसिएशन होती थी, पादी साहब, त्यागी साहब, तो मेरा एक ही सवाल होता था कि एक चाय पार्टी कर ली, एक पिकनिक कर ली, मिले और चले गए. तो मैं ये पूछा करता था कि क्या तुम में से कभी दोस्तों किसी ने सोचा कि हम उस संस्था को क्या दे रहे हैं? हम आपस में तो किसी भी नौकरी में वो एक क्लब बन जाता है, पर हम लोग आपस में क्यों मिले? 72 का बैच और 77 का बैच, या 77 का बैच और 85 का बैच, हम लोगों में आपस में क्या रह गया? कुछ भी नहीं, सिवाय इसके वी हैव बिलोंगिंग टू द कैंपस. Even on gaps of 10 years or 15 years or 20 years, we belong there, we came from there. I called Saroda, the Delhi Police Commissioner. Immediately, मैंने अपना परिचय दिया उनको, पहले WhatsApp पे लिखा, and he called me. I called him, he didn't answer, unknown number था. फिर मैंने WhatsApp पे लिखा. जैसे ही मैंने लिखा बैच ऑफ 72, 77, उनका वापस फोन आया, और वो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर मुझे यस बॉस करके उन्होंने एड्रेस किया. मुझे एक बड़ा ही अजीब सी फीलिंग हुई, और मैंने उनसे कहा, महाराज, आपके दरवाजे पे तो आकर के लोग खड़े रहते हैं, आप तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है. बोले आके तो देखिए, आप अपना एक पर्ची तो बाहर आकर के बताइए आप कौन है, फिर देखिए कैसा. तो ये एहसास बड़ा अच्छा होता है कि हम लोग कहाँ कहाँ फैले हैं. पे हमारे बैचेस ने अपना योगदान किया है, और मैं अपने बैच के लिए कह सकता हूँ कि हमने भी समाज में और सोसाइटी में और देश को अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग ओहदों में, प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकार में,
और दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज में, जिनमें एक में मैं भी था, हमने कोशिश की है। कितने कामयाब हुए पता नहीं, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कोशिश की है कि हम इस देश को कुछ वापस दे सकें और इस संस्था का नाम कर सकें कि हम वहां से आए थे। हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स यहाँ निकले थे, और जब मैंने शेर कहा उसके अलावा ये भी था कि जब निकले थे तो आंखों में एक नमी थी कि पता नहीं अब सब लोग एक साथ कब मिलेंगे। और मेरा दोस्त सुरेंद्र सिंह शेखावत उस फेयरवेल नाइट में गाना गा रहा था, कभी अलविदा ना कहना, और कितनी आंखों से उस समय पानी टपक रहा था वो मैंने देखा था। तो आज यहाँ आकर के फिर वैसा ही फीलिंग है। इस सब के लिए आपके हम आभारी हैं, आपने ये मौका हमें दिया। इतना एक्सपेंशन है संस्था में, इस कैंपस में, उसको देख के गुरूर भी होता है। 10 साल पहले हमने, हमारे बैच ने, और मैं, कुछ लोग मेरे बैच के हंसते हैं कि ये जहां खड़ा होता है ये उस बात को जरूर करता है। एक गतिविधि यहाँ हुआ करती थी, त्यागी पादी साहब आपने भी सुना कि नहीं, ऑल इंडिया अडवाणी मेमोरियल बास्केटबॉल टूर्नामेंट, वो हमारे बैच ने शुरू किया था। प्रोफेसर RM अडवाणी, जब हमारा एडमिशन यहाँ हुआ तो आफ्टर डॉक्टर गर्डे ही हैड टेकन ओवर द प्रिंसिपल होती थी डेजिग्नेशन, ही वाज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और वो कुआलालंपुर गए थे 48 से 49 साल की उम्र में, उनका रास्ते में ही पे हार्ट अटैक होके एंड ही पास्ड अवे। उनकी बॉडी यहाँ आई थी, बच्चे छोटे थे, और वो परिवार यहीं कैंपस में, हमको याद है कि वो कितना मुश्किल था। और महावीर पूनिया साहब और मेरे बैच के बहुत सारे लोगों ने उस फैमिली को भी संभाला था। तो जिस दोस्त का मैंने अभी नाम लिया शेखावत, उसके भी दिमाग में एक बात आई कि उनकी याद में कुछ करना चाहिए। तो हम में से कुछ लोग मिल गए, मैं तो बाद में शामिल हुआ, मुझे तो बुला के पकड़ करके बिठा दिया गया कि तुम मीडिया को हैंडल करो। लेकिन एक छोटा सा बास्केटबॉल टूर्नामेंट हमने शुरू किया था। उस साल का बजट 6,000 रुपये मात्र था। 10-10, 20-20 रुपये इकट्ठे करके, और कुछ सरकार से 1-1.5 हज़ार रुपये की मदद मिली, स्पोर्ट्स काउंसिल से वो ले आया था। और वो इतना पॉपुलर हुआ उस साल कि एशिया के सबसे मशहूर खिलाड़ी थे खुशीराम, अजमेर सिंह और परमजीत सिंह, ये लोग ओलंपिक खेले सन 80 में मॉस्को में, हनुमान सिंह, तो ये लोग यहाँ खेले। और इन्होंने हमारा हाथ पकड़ के और जाते जाते हमारे कंधे पे हाथ रख के कहा कि यार इसको अगले साल ऑल इंडिया लेवल पे करो। तो कुछ सीनियर्स का ये ख्याल था, अरे नहीं यार ये हर साल हो पाएगा, लेकिन एक सनक सी चढ़ गई थी कुछ लोगों को, और उसके अगले साल हमने उसको ऑल इंडिया कर दिया। अब को याद होगा कुछ को, लेकिन मेरे बैच को याद है कि 16 साल वो एक्टिविटी चली। 16 साल उसने बहुत कुछ इस देश को दिया। बास्केटबॉल के नेशनल कैलेंडर पे उसका बड़ा नाम था। इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट ऑन नेशनल बास्केटबॉल कैलेंडर। और तीसरे साल में सब अखबार हमको बड़ा प्यार करते थे। अखबारों में आधे पेज में हमारा कवरेज छपता था, इंटरव्यूज छपते थे, गुरु की याद में बास्केटबॉल चैंपियनशिप वगैरह वगैरह। और उन 10-12 दिनों के लिए ये कैंपस जो है चमन हो जाता था। तो तीसरे साल में ऑल इंडिया रेडियो वालों ने देखा, अरे यार ये तो बड़ा कमाल का चीज है। मैं डायरेक्टर को जाना था, उनसे बात की, और वो हुआ जिसकी कभी कल्पना भी नहीं मैंने की थी। लाइव कमेंट्री बास्केटबॉल की इस देश में इस कैंपस से हुई। और तीसरे टूर्नामेंट में एक कमेंट्री बॉक्स कोर्ट के ऊपर बन गया। हम लोगों ने एक कंक्रीट का कोर्ट बनाया। पहले हम किराए के लकड़ी और फट्टे लाया करते थे शहर से, और हम और हमारे जूनियर बैचेस उसको रस्से से, सूत से बांध करके और स्टैंड बनाते थे। 6-6, 8-8 हज़ार लोग शहर से आते थे, रोडवेज में जाते थे, उनसे कहते थे बसें चलाओ हमारे कॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा बसें चलाओ। एक टेम्परेरी टेलीफोन कनेक्शन लेके लगाते थे। मेरा मतलब है, इसको ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन इस गतिविधि ने हमको ये सिखाया कि आपको बड़े लोगों से बात कैसे करनी है, to give you the self-confidence that you need, which is much required in life. And we went live in the air, and another matter of pride, उस commentary box में 3 शख्स थे, तीनों इस कॉलेज की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हिस्सा थे। हिंदी कमेंट्री थी, लाइव हुई,
नेशनल नेटवर्क पे गई. Yours faithfully was the first commentator. My 1 year junior Neeraj Rajvanshi was the second commentator. And the guy who talked about the championship first in the Shekhawat was keeping scores for us. और वो फिर उसके बाद में वो एक एनुअल फीचर हो गया, बाद में तो टीवी भी आ गया, बहुत कुछ हुआ. और आज से 10 साल पहले गोल्डन जुबली साल में हम लोगों ने उसको रिवाइव करने की कोशिश की. बहुत अच्छा लेवल पे वो टूर्नामेंट हुआ. यहाँ पे श्रीलंका की टीम लाके हमने खिलाई थी. जब इंडियन टीम एशियन गेम्स की प्रिपरेशन करती थी या एशियन चैंपियनशिप की, तो इंडिया येलो और इंडिया ब्लू यहाँ आके खेलती थी. ऐसा उसका माहौल था. तो वो एक बहुत बड़ी बात थी. एशियन गेम्स हुए 82 में, तो जो 3 आवाजें हिंदी में थी आकाशवाणी पे, वो तीनों इस कॉलेज के स्टूडेंट थे किसी समय. और हमारे यहाँ एक असिस्टेंट स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर डायरेक्टर होते थे, DC शर्मा साहब. He must be pretty old now. He had a heart attack a few years back. H.K. कौशिक साहब के साथी थे. वो एशियन गेम्स मेरे साथ स्कॉलर थे. तो ये इन चीजों की याद आती है तो लगता है कि वो उसका कोई अंत नहीं है कि हम कितना यहाँ से सीखे. और पुराने वक्त की बातें करते हैं तो ये लगता है कि हमारे वक्त तो 600 अच्छा था, 600 स्टूडेंट था. और आप हंसेंगे, हंसने की बात भी है कि मेरे साथी आंखें तरस जाती थी एक फीमेल देखने के लिए. यंग लड़के बसों में बैठ के, साइकिल उठा के, किसी की मोटरसाइकिल उधार देके यूनिवर्सिटी तक या कानूनिया कॉलेज तक जाते थे. उसके बाद के सालों में मैंने देखा कि किस कदर यंग स्टूडेंट. और मिशा शाह, डॉटर ऑफ प्रोफेसर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, हमारे हेड शाह साहब, कोई देख के देखे डर लगता था. 100 गज के दायरे में जाने की हिम्मत नहीं होती थी, पर हम ही में से एक लेके चला गया. मनीषा बैठी है, अब मैं इतने साल बाद मजाक कर सकता हूँ. तो ये सब किससे याद आते हैं. अब तो यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं, आप हमारी बातों का मजाक समझिएगा कि अब हमारी बेटा और बहुएं आपसे बड़ी हैं उम्र में. लेकिन मैं जिस बात पे आ रहा था वो ये था कि मैटर ऑफ प्राइड दैट वुमेन पावर इज ग्रोइंग एंड वुमेन एजुकेशन इज ग्रोइंग एंड वी आर इन दिस इंस्टीट्यूशन, वी आर नो एक्सेप्शन. जब उस समय 10 साल पहले जब मैं यहाँ बास्केटबॉल करने के लिए दोबारा हम आने लगे, तो उसके बाद में भट्ट साहब से दोस्ती हो गई. भट्ट साहब उंगली पकड़ के मुझे हर बार जब आता था तो कैंपस की एक नई चीज दिखाने ले जाते थे. क्या हमने ये बनाया, फिर ये बनाया, आज देखिए छत पे ले गए, कंप्यूटर सेंटर इतना बड़ा. फिर छत पे उंगली पकड़ के ले गए कि 2 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट पूरे देश में शायद उस समय नहीं था टेक्निकल इंस्टीट्यूट में. तो उसको देख के ये छाती भी चौड़ी हो जाती थी, ये छाती भी 56 इंच की हो जाती थी. मेरी नहीं है. तो हमें बहुत गर्व होता है ये देख के कि आपने इतनी तरक्की की है यहाँ पे. इसको बनाए रखिए. हमसे जो योगदान होगा हम जरूर करेंगे. और एक अलग माहौल आपने क्रिएट किया है, उसका फायदा बच्चों को, स्टूडेंट्स को मिला है. हम समझते हैं कि आने वाला वक्त बहुत सारे परिवर्तन ला रहा है. देश में बहुत तरक्की हो रही है. ये बड़ी बात है. एक और बात, जब यहाँ खड़े होते हैं तो यादों का दायरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी सबसे पहले आंखें को ढूंढती हैं जो अब यहीं हैं. हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, मेरे गुरुजन, जिनके लिए श्रद्धा से सर झुक जाता है. तो जो नाम आते हैं, मैंने आज सवेरे बैठ के 6 बजे उठ के उनको को लिस्ट करने की कोशिश की थी. वैसे तो वो यहाँ हैं, प्रोफेसर अडवाणी, प्रोफेसर तालेकर, और एक बार गल्डे साहब को भी यहाँ मिले थे हम, जिन्होंने इंस्टीट्यूट शुरू की. प्रोफेसर दांडेकर, प्रोफेसर A.V. रामानुजम, प्रॉक्टर एंड सिविल इंजीनियरिंग, प्रोफेसर रविंद्रनाथ मेरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इलेक्ट्रिकल में, एंड फिनिशिंग इट, श्रीनिवासन साहब वगैरह वगैरह. तो ये सब मेमोरीज हैं. इनको श्रद्धा सुमन पेश करते हुए और अपने उन साथियों को श्रद्धा सुमन पेश करते हुए जो आज यहाँ नहीं हैं, जिनमें से
एक दो की पत्नियां यहाँ हैं। आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि उनको भी हम याद करते हैं, उनको मेरे श्रद्धा सुमन मेरे बैच की तरफ से, आप सबकी तरफ से। इसके साथ ही मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। हाँ, आखिरी बात, ये यंगस्टर्स ने जिन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया है, आप सबकी तरफ से मैं उनका प्रशंसक बन गया हूँ पिछले 1 घंटे में ही। बहुत ही तरीके से, बहुत ही सिस्टमैटिकली ये सारा अरेंजमेंट है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भी उनको याद करके आंसू ही आते हैं जब होता है तो इसके साथ ही मेरी बात खत्म। मेरे को 7 मिनट का वक्त दिया गया था, लेकिन आदत है, प्रोफेशनल हूँ, कभी कभी ज्यादा बोल जाता, माफ कीजिएगा। और अब आप बुलाएंगे लोगों को? हाँ, थैंक यू रेस्पेक्टेड गुरुदेव सिंह बोस। अभी हमारे संस्था की तरफ से एलुमनाई टाइम्स मैगजीन हर वर्ष जारी की जाती है। इसमें हमारे संस्था के विद्यार्थियों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बड़े तनमन से वो इसमें अपने एफर्ट डालते हैं। तो मैं हमारे डायस डिग्नेटरी से निवेदन करता हूं कि इस मैगजीन का विमोचन करें। पहले इस एलुमनाई टाइम्स मैगजीन का विमोचन आदरणीय चेयरमैन साहब, डायरेक्टर साहब, दीन सर, सभी लोग सबसे पहले उनको लेना नहीं, पहले एक कर दें उनका, पहले गोल्डन शुरुआत, पहले गोल्डन, फर्स्ट गोल्डन, चाहे 5 ही कर दो, सिविल बेस। आप ही नाम बोलेंगे एक एक, और जो ऊपर आएंगे तो उनके बारे में ब्रीफ करने से, ये सारे ये नाम गोल्डन अखंड, ये सब गोल्डन है। अच्छा, ये आपके मैंने तैयार किए तो मैं अल्फाबेटिकली बाय नेम। आप इनको बुलाएंगे, इनके बारे में बोल देंगे। ये ब्रांच के हैं, आपने तैयार किया होगा? मेरे पास तो ये है। हाँ, ये है अल्फाबेटिकली नहीं है। 30 सेकंड है तो अल्फाबेटिकली। हाँ, तो मैं तो लिस्ट आपकी हेल्प के लिए भाई। हाँ, रखो। बस 5 लोग बुला लोगे ना, उसके बाद सिल्वर जुबली केक बोलो। चेयरमैन साहब रुक गए ना, आपकी बाइट, आपकी बाइट सोल की बस कराइए। हाँ, सुरभि का क्या त्यागी साहब गए क्या? अभी आदरणीय गुरुदेव बोस का एक इंटरव्यू हो रहा है, उनके वापस आते ही गोल्डन जुबली बैच का फेलिसिटेशन स्टार्ट करेंगे। आर्किटेक्ट रमन, उनकी फ्लाइट है और उन्हें बहुत जल्दी जाना है। मैं सुरभि रमन पर आमंत्रित करता हूं। सुरभि रमन फ्रॉम आर्किटेक्चर। भाइयों, तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। सुरभि फ्रंट प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बॉस।
कुछ बाइट करनी। अभी गोल्डन बैच के फेलिसिटेशन में ब्रांच वाइज एक एक आदरणीय बोस को यहाँ मंच पर स्पाउस के साथ आना है। आदरणीय गुरुदेव बोस आपके बारे में बताएंगे और आपका नाम अनाउंस करेंगे। पहले सिविल ब्रांच से, फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, फिर मैकेनिकल ब्रांच से और लास्ट में मेटलर्जी ब्रांच से एक एक करके आप मंच पर आएंगे और आपको मोमेंटो और जो गिफ्ट तैयार किया है वो भेंट किया जाएगा। मैं हमारे गुरुजन जो हमें पढ़ाए रिटायर्ड जो हैं उनको एक एक करके मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं। प्रोफेसर एस जी मोदानी सर कृपया मंच पर आएं। प्रोफेसर एस जी मोदानी सर फॉर फेलिसिटेशन प्लीज, प्लीज बॉस। प्रोफेसर नारंग सर, प्रोफेसर ए के भार्गव सर एंड प्रोफेसर वाई सी भट्ट सर, हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। यस, ए के भार्गव सर भी प्लीज ऊपर आ जाएं यदि वो आ सके। बस सर आगे, हाँ कोई बात नहीं, बस बेटा आगे सर के पास, बस आप आ जाइए, बस आगे सर, थोड़ा सा आगे। सर थोड़ा आगे चलिए प्लीज। डायरेक्टर साहब ठीक है सर, दिक्कत अपने हाथ में सब। मोदानी जी को बुरा लग रहा है। हाँ, एक भट्ट साहब बोर्ड पहना के आ जाओ नीचे। मैं पहना जल्दी भाई साहब, भट्ट साहब आ जाओ एक मिनट। भट्ट साहब आप वो आ नहीं पाएंगे ऊपर, ये भट्ट साहब रहे इनको। हाँ सर ही आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। हाँ राणू बोस भी आ जाएंगे, सोलंकी बोस भी हैं, जैन सर आ जाएंगे। हाँ तो वहीं दे दो ना। हाँ वहीं। मैं डिग्नेटरी से निवेदन करता हूँ कि मंच के नीचे हमारे गुरुजन वाई सी भट्ट साहब हैं, कृपया उनको वहाँ सम्मानित करें। हाँ बोस प्लीज। प्रोफेसर ए के भार्गव साहब गुरुजी आ गए हों। ये नारंगी अच्छा वो माता लोग। ओहो
प्रोफेसर A.K. भार्गव सर, ऊपर ऊपर सर प्लीज, सर ऊपर, नहीं ऊपर। सर को कमेंट के बाद फेलिसिटेशन, बस टाइम बचे यार। नहीं बॉस तो तैयार है ना, तो कर दिया। यस बॉस, ये आपकी श्रवण का कर ले नीचे, नहीं जैसे आएगा नीचे चले जाएंगे, तो लाने में टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। नहीं हम नीचे चले जाएंगे, पर नहीं जाना, नीचे चले जाएंगे। जाएंगे, यहाँ तक तो लाना पड़ेगा उसको यार, बच्चे भेज दूंगा वॉलंटियर। अब आदरणीय गुरुदेव सिंह बोस से निवेदन है कि वो गोल्डन जुबली बैच का फेलिसिटेशन प्रारंभ करें। आदरणीय गुरुदेव सिंह बोस। क्या सबको मिलेगा। मैम मैं हमारे आदरणीय गोल्डन जुबली बैच सिविल ब्रांच से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आने के लिए तैयार हो जाएं। आदरणीय गुरुदेव बोस अब आपको एक एक करके बुला रहे हैं। आप लोग पहले तैयार रहेंगे तो कुछ समय हम बचाने में समर्थ रहेंगे। सिविल ब्रांच फर्स्ट। I request all the dignitaries to be in front of the dais for felicitating our golden jubilee batch. So we start with civil engineering and I'll switch to proper English. जल्दी जल्दी करेंगे हम, थोड़ा सा वक्त की हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह में और अपने जश्न में काफ़ी वक्त लगा दिया, तो जो जायज़ भी है, इतने साल बाद आएंगे तो ये होता है। ब्रिगेडियर गुरुदेव सिंह बिंद्रा। He's a very unassuming person. He joined the Indian Army, which was in accordance with his father's dream, and he rose to the coveted rank of a brigadier of the Indian Army. He's a different personality from the Gurudev Singh Bindra we knew in our college days. He was appointed instructor at the National Defense Academy and also at the College of Military Engineering. He took part in the Kargil operations for this country. Today, Brigadier Bindra is focused on giving basic education to needy children from the lower strata of society. Shri Jagdish Prasad Yadav, most popularly known as JP in our local parlance in the batch.
He is a very sincere and suave individual with a rural background. Started as a junior engineer in the Public Health Engineering Department of the Government of Rajasthan and switched over later to PWD, the Public Works Department of Rajasthan government. After a long innings there, he took voluntary retirement in February 16 as a superintending engineer. He is providing his technical knowledge and expertise to the Rajasthan Lok Ayukt, which appointed him as a Deputy Secretary Technical, where he worked successfully for 3.5 years. Shri Jagdish Prasad Yadav. Colonel Jaikishan Veerwani. Colonel Jaikishan Veerwani was commissioned in 1978, joining the Corps of Engineers in 1978. He did a master's in docks and harbor engineering, a very special field, at IIT Mumbai. And after this completion of this course, he visited several naval harbors in the world: Japan, South Korea, Hong Kong, and Singapore. Thereafter, he worked on several prestigious projects for the Indian Navy at the naval dockyards at Kochi, Goa, Vizag, and Mumbai. I remember having met him at Vizag and Mumbai. His major achievement in life was to complete the prestigious and strategically important project for the construction of high-tech submarines at Visakhapatnam as a young major. He made a smooth transition later in his career to the corporate world and contributed to various projects of the National NHAI, National Highways. Colonel Veerwani is now settled in Greater Noida. Okay. Kishan Verma graduated in civil engineering, but before that he was the chess captain of the college and participated in inter-varsity competitions. Nahi hai. I apologize. Mahendra Kumar Jain. Nahi hai. Yes. Shri Praveen Jain, my partner in crime when I was working on these resumes, briefs in the last few days. Praveen Jain specialized in town planning and joined the government of Rajasthan, where he rose to be chief town planner. Contributed in many ways to urban development, to policy formulation, master planning, building regulations, housing norms, industrial development, and so on. The regulations, housing norms. He pioneered the first, to bring the first heritage bill in the country and was part of a prestigious GIS award. Shri Rajiv Malhotra. So we have had two successful chief town planners in succession from our batch. Shri Rajiv Malhotra is currently a visiting faculty in SPA Delhi, but he superannuated from NCR Planning Board, the Ministry of Urban Development. He had been the chief town planner for the National Capital Region, where he successfully handled very, very many important projects. Integrated water management plan, integrated transport plan, preparation of draft DPRs for regional rapid transport system, the in thing now, and so on and so forth. Shri Rajmal Jain. Rajmal Jain is a real success story of a pure rural guy, first working in engineering in first division and then joining in public health engineering department, later moved to PWD, and finally, having done great job in national highway building and road sector, he retired as a chief engineer. Shri Rakesh Bhargav. In his college days, he was a key sportsperson and debater, but he joined the Public Works Department, standing tall in wherever he went, retired as additional chief engineer from PWD. Played an active role in the construction of many iconic buildings like the new Vidhan Sabha in Jaipur, the Jawahar Kala Kendra, and the Chief Minister Office, besides
a leading hospital. He was awarded the State Merit Award in 2001. Here is the big achiever, Rakesh Verma. Is he here? No? Nahi hai. The first IAS from MREC, I should mention that anyway. Shri Ratan Kumar Srivastav served in various government organizations like the Central Warehousing Corporation, National Hydropower Corporation, and then moved to private sector like the GIL and Jindal Steel. Water resources and hydropower development has been his interest area and forte. Here is a person I admire, Engineer Shri Shravan Kumar Sharma. After 38 years of an illustrious service with the Public Health Engineering Department, he retired in 2015 at the rank of Chief Engineer. On duty in 1997, his vehicle met with an accident, leaving the lower part of his body completely paralyzed. It's a real service story, real success story. This did not deter him in his work, and Shravan Sharma dedicated himself to the cause of making drinking water available to the water-starved desert districts of Rajasthan. Shravan Kumar Sharma. I will now invite my once room partner, Shri Pyarelal Solanki, retired as Chief Engineer in the Public Health Engineering Department, where he served with distinction throughout his career. Pyarelal Solanki. The person I am calling now is my dear friend Sukhjinder Singh Smug, very active in sports in the college, captained the hockey and kabaddi teams, was a general captain and also cultural secretary, and was also a secretary in the team which hosted the first Advani Memorial Basketball Championship. Sukhjinder Singh Smug served with distinction professionally for 38 years in the irrigation department and retired as superintending engineer. And very interesting, he's now focused on farming, where he's growing different varieties of fruit. Marries off as a service to society. He's arranging the marriage of one poor girl child every year. Engineer Vinod Shah joined the State Water Resources Department after college. Having served for a few years there, he did M.Tech from Roorkee with honors and actively involved in mega projects worth 1.4 lakh crore for Rajasthan government, which included significant bilateral agreements with signing significant bilateral agreements with foreign funding agencies. He received the National Award in Best Water Management Services for his excellent work in the area of water resources. And now I move to my electrical engineering colleagues. Ajay Kumar Arya.
वो तो नहीं मैं बुला रहा हूँ, पर नाम सिविल में कौन रह गया आप लोग? ये जी विनोद शाह। हाँ, there is no background. My civil engineer friend Jagdish Parikh, from the batch of 1972, served with distinction in the state. वो मेरा हाँ मतलब छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे करो. I will request Engineer Ajay Kumar Arya, Engineer Anand Datta, and Anil Patni ji to be. Shri Ajay Arya joined Hindustan Copper in the beginning and then moved to marine engineering and joined the Merchant Navy as a marine engineer. With this profession, he spent a very long time and now leading a retired life. Engineer Anand Datta worked briefly with NTPC as my colleague till the year 1981, and then he moved to the entrepreneurship sector. He set up a packaging unit in Ghaziabad, and in later years he switched to something different, set up a wealth management firm specializing in family office in 2003, president of the UP Corrugated Box Manufacturers Association for a very long time. Engineer Anil Patni dedicated 38 years of his life in the power sector in distribution, transmission and generation companies of Rajasthan government, and also in the renewable energy sector. Retired as a chief engineer from the state's generation company and has been one of the directors in the Rajasthan Solar Park Development Company. I'm proud to mention that the Bhadla Solar Park developed during his tenure is the largest solar park in the world as of today, which is a matter of pride for his batchmates and including me and for our institution. Engineer Arun Kumar Garg, Engineer Ganesh Lal Rajoria, and Engineer Kamlesh Kumar Jain. Arun Kumar Garg graduated, of course, in 1978 and served the power sector throughout his life for almost 37 years, starting with Bharat Heavy Electricals, a Navratna company, and the bulk of his life later he spent with NTPC, from where he superannuated as an additional general manager a few years back. Engineer Ganesh Lal Rajoria, after 1 year in Engineers India Limited, he moved to the Indian Railways, served in various capacities, including chairman of the Railway Recruitment Board, wrote a book on maintenance of shunting locomotives, which got an award from the ministry. And when he retired, he was in a very prestigious position as Principal Chief Mechanical Engineer at the Chittaranjan Locomotive Works in West Bengal, reporting to the Ministry of Railways in Delhi. Engineer Harish Kumar Sharma, after college, he worked briefly with the Rajasthan Electricity Board and moved to Instrumentation Limited Kota, a central PSU, from where, after an illustrious career, he retired as a general manager. Engineer Kamlesh Kumar Jain was a topper of the electrical branch in my batch and was awarded a gold medal
He started with RSEB, but moved on to Public Sector Enterprise IL Kota, and from there, in IL Kota, he had the distinction for very special designs of system design of process control and instrumentation of 1500 megawatt Korba superthermal project. He brought technical collaborations from many countries, including Japan, for special technologies to this country. He has had a very special contribution, bringing technology to the private sector and indigenizing it. कमेंट्री से ज्यादा मुश्किल काम है. इंजीनियर खुशजीव सिंह सेठी, कोटा वाले, ओरिजिनल मोहाली वाले today. He took over his family industry and performed a miracle with it. He's a mechanical engineer. He is an electrical engineer, but has done the job of a mechanical engineer most of his life. In tool and mold design and component designs, largely switches and connectors for very, very fine performances in electronics. He has worked in low-cost automation and quality systems and was a Six Sigma black belt. Also in social service, was president of the Rotary Club of Mohali. Is engineer Kishori Sharan Sharma here now? Kishori Sharan Mathur, my apologies, my friend. Been talking to him all yesterday. Group Captain Kishori Sharan Mathur is a name we are proud of. Commissioned in the Indian Air Force, where he served for 29 years. He was nominated then by the Ministry of Defense to do his Masters in Optoelectronics and Optical Communications at IIT Delhi, and it changed his life. On superannuation, he is focused on academics and is now a professor of Electronics and Communications Engineering. In addition, he has a series of technical papers which earned him the prestigious Best Paper Award at the International Conference of Data Intensive Computing. He authored his first book entitled Fiber Optics Fundamentals and Advances in Optical Communications. His in-depth knowledge of fiber optics is reflected in this book. He has received for his books contributions and appreciations from the Chief of Defense Staff, the Chief of Air Staff, and many other dignitaries, including the Office of the Prime Minister of India, where he was invited for an in-depth discussion for 3 hours. Engineer Kishori Sharan Mathur. Engineer Rajvardhan Gupta, also a lawyer by qualification. He has served 45 years in the private sector in the field of organization, development and management training, planning, procurement, imports, insurance, marketing, IT, and school education. He's a perfectionist and has dedicated his life to social work and overall development of society. But more, he's also a very accomplished Hindi poet, a very good player of hockey. Engineer Sanjeev Bharadwaj. Indian Railways owes a lot to Sanjeev Bharadwaj. He has served in various capacities in the field of railway electrification, electrical multiple unit trains, where you are reminded of the Tray 18 project, the pet of the Prime Minister, electric locomotives, air conditioning, etc. He joined Delhi Metro on deputation and had the privilege and honor to work with the famous Metro man, Dr. E. Sridharan. Retired as a CEO of a railway public sector unit. Engineer Shashi Om Katiyar joined RSEB. I've seen him. No, I met him, yes. Yeah, he's coming. Engineer Shashi Om Katiyar, after 11 years with RSEB, moved on to NTPC and
retired from there as the head of a department of electrical engineering in operations. Presently working, Shashiom is working as a consultant and guest faculty for the Power Training Institute. Engineer Narendra Kacholia served 39 years with distinction at the Rajasthan State Electricity Board. He was too modest to give me his brief, so I'll have to speak extempore. And he retired as a chief engineer, working too hard for the government. Air Commodore Shoreen Mukherjee. During the college days, we knew him more as a college footballer. He was captain of the college football team, the cricket team, and the swimming team, all-rounder. Got the Best Actor award in All India Youth Festival here in 1973. But after college, moved on to a totally different field, Indian Air Force, served for 34 years, and retired as Air Commodore. And his wife, coming with him, was herself an Air Force officer, a wing commander in the medical arena. We are proud to say that here is a defense officer from our college who served with distinction in 3 different very important operations for this country. The Indian Peacekeeping Force operation in Sri Lanka, then he participated in the well-known Kargil War, and also in Operation Brass Tacks on the Rajasthan and Pakistan border. Engineer Surendra Singh Shekhawat, इनको तो बहुत publicity मिली है. Very popular man. Was captain of the basketball team. Used to sing and participate in dramatics. I don't know what he does better, serving engineering or his dramatics and his singing. Worked with RSEB and later in the Ajmer Vidyut Vitaran Nigam, where he superannuated as a superintending engineer. Wing Commander Vidyakant Kala played a prominent role in this coordination of this batch felicitation work. He joined Indian Air Force thinking that he is now done with serious studies, but didn't know that what is in store for him with the defense services. He had the pleasure of commissioning India's first indigenous radar, ATSRU, at the Air Force Academy in Dindigul, Hyderabad. He had done Masters of Technology at IIT Kharagpur and then MSc Defense Studies at DSSC, Wellington, and more. He made a career shift many years back to the corporate world, joined hands with US Commercial Council in Mumbai, and set up a group of American businesses and business clubs focused on giving back to society as the MD of My Crack, a wellness code foundation. So that comes the end of the electrical engineering batch, but I am told I missed out. No, do not. Engineer Srinath Pal. Engineer Srinath Pal. Engineer Ramkumar Mishra. And late engineer Mohammad Zafar Kaleem. His family are here. Zafar Kaleem worked with NEI for quite some time, is that I know, my good friend. We will now move to mechanical engineering.
Abani Kumar Saha served with Hindustan Motors and thereafter he moved to the West Bengal Electricity Board, the West Bengal Power Development Corporation, and retired as a Deputy General Manager. He was more popular in this college. He has been popular for his mouth organ playing art and also recognized by Akashvani for this musical skill. Engineer Ajay Kumar Sharma. Before that, we have engineer Abani Kumar Saha, the mouth organ playing champion. Engineer Ajay Kumar Sharma served most of his career with Canara Bank and mainly dealt with industrial finance, presently engaged in social work. Is he here? No. My good friend, engineer Babulal Chaudhary, I think we dominated Hindustan Motors. Joined Hindustan Motors Limited Engine Division, and the major work involved under him was the manufacture of diesel engine for the Ambassador car till the year 1996. Joined another Birla company in Kolkata later itself in 1998 and worked for 2 years. Finally served in Kolkata-based export-oriented engineering company from the 2000 to 2020 period as vice president. Engineer Daljit Singh Chauhan, the dance and music champion of the batch, but a mechanical engineer. He served all his life with Tata Steel in Jamshedpur, superannuated as General Manager Maintenance from Tata Tin Plate. Now working as an administrator in his family-run hospital and IVF unit, which is, of course, more Mrs. Chauhan's venture. Has been a president of the Rotary Club of Jamshedpur. Engineer Dinesh Rimali, coming all the way from California in United States. It's a very big success story. The guy comes from Pali in Rajasthan and moves over after college to do MTech on a railroad scholarship in America. And then after taking the railroad scholarship award, he moves on to nuclear power plants. In fiber optics, he specialized, and then he moved on to a building construction business, so a very checkered career. He was granted also patents on invention of LED packaging devices, which contributed to commercialization of the well-known LED products. Today, he is a stand-up comedian. You will see some of him this evening if you're there in the cultural program. Traveling and gardening. Serves as spiritual volunteer for hospitalized patients in America, in his territory. Engineer Maitrey Patel joined National Engineering Company for a year, but then went on to teaching in MREC, and then moved to the corporate world in the oil industry sector, starting from Indian Oil, shifting to Exxon in Oman, and then to the Shell company to work in the Middle East, Africa, and United Kingdom at various senior management positions. Settled at the moment as a private entrepreneur in Dubai. So now you know whom to contact when you are in Dubai. A very hospitable friend. Engineer Pradeep Kumar Gupta worked with Hindustan Motors Calcutta for 35 long years, was general manager of the press division when he retired in 2014 and is based in Kolkata.
Engineer पेपर ही नहीं है, लिस्ट में है बट पेपर नहीं है मेरे पास। लिस्ट तो है, लिस्ट में है, यहाँ से उठा लिए। Let me continue with this. Engineer Sunil Mishra, after having done an MBA from the Podar Institute of Business Management in Jaipur, served NEI for a long time throughout his career and is settled in Jaipur after having retired. Engineer Vipin Mathur also joined NEI Jaipur, where he worked in different divisions and disciplines, design, maintenance, and manufacturing being his specialty. Superannuated as the plant head and senior general manager. Huh? Well, we seem to have missed out my very dear friend Bilash Kumar Dey, coming from Bombay, mechanical engineer. Bilas, you did not choose to honor us with a brief. You had. My apologies. Can tell me something. Then. Yeah. In life. Yeah. Bilas Kumar Dey has been in the private sector most of his life in Voltas, and then is a visiting faculty in Bombay. And the person I mentioned earlier, my friend Dhiren Bhatt, with his wife Manisha. Of course, she will have her own felicitation, probably a couple of years later. So then I think, Dhiren, you will have to come with her. Private sector in the industrial stone cutting and polishing sector, right? देखो जिनको भेजा और कौन है, हो गया योगेश चतुर्वेदी नहीं है, सुरेश शर्मा, इनका वो सब कंपाइलेशन। इंजीनियर सुरेश चंद्र शर्मा, SK शर्मा, बेटर। अभी मेरे पास आया नहीं, इनसे तो इतनी, हाँ मेरे को भेजा था, लेकिन वो सब इन्होंने मेरे से ले लिया। और served in the private sector throughout his life with distinction in his own business company. Very hospitable person. You cannot pass Sonipat without meeting Suresh Sharma Sahab. Very popular in the batch. Metallurgy. नहीं योगेश का तो वही तो बात है, इनका साहब के रेज्यूमेज जो हैं गड़बड़। योगेश, engineer Yogesh Chaturvedi, I feel ashamed, has come all the way with a lot of excitement from Canada, Toronto. We seem to be missing the brief he had sent us here, but I will get him here. And he worked in the atomic energy sector, although in India, we were in India, ILK. Indian Airlines and ILK were the fields where he worked in India before moving on to Canada, and a wholly different field, Nuclear Power Corporation of the Canadian state. I now move to
metallurgy. Engineer Ashutosh Dikshit was the top of his batch and also a member of the college basketball team. Having served a few years at NEI, he joined the Rajasthan Financial Corporation, where he played a vital role in industrial development of the state. Ashutosh served in RFC for 32 long years and is now providing industrial financing consultancy. Here is a name which brings many sweet memories to me. Engineer Narendra Kothari, late friend of ours. He started with Steel Authority in Delhi, moved on to be Executive Director of Vigilance at the corporate office in Delhi, and in 2013, he became a CEO of Steel Authority's ISCO steel plant in Burnpur. Thereafter, the flowering glory of his career was his appointment. I have Mrs. Manju Kothari receiving the memento. 3 cheers for Narendra Kothari and Mrs. Kothari. He rose to be chairman cum managing director of NMDC, which is a Maharatna PSU, and I know he was doing a lot of social support work because I was a beneficiary in my college of CSR from this great friend of mine. We lost him about a year back in a very strange mishap in Udaipur in his home. Engineer Narendra Mehta, after an initial brief stint at Hindustan Copper Limited in Khetri and Alcobex Metals Jodhpur, he joined Steel Authority of India Limited, where he served for 17 long years in marketing of steels, fertilizers and chemicals. He was posted in various locations throughout the country and is now providing consultancy to prestigious clients like Tata Steel and McKinsey. Anil Garg. Engineer Anil Garg and engineer Sajjan Raj Mehta. Late Sajjan Raj Mehta is sad while we remember him. Engineer Anil Garg retired as Deputy Manager in the Ministry of Defense in a very prestigious position. Late Sajjan Raj Mehta had come to this college from BHU, actually, in the second year, and he started and served throughout his career. We are grateful to Mrs. Mehta to be here to receive his memento. To be honored here, his family business, Mehta and their son, they served throughout in their family industry, provide manufacturing springs for railways and automobiles, and thereafter castings, and we lost him in 2017. Mrs. Basanta Mehta. Is that all? We done? और देख लीजिए, एक रह गए, आप आ जाइए बस. Okay. Engineer Vishnu Kumar Sharma. And retired professor from this. So when you join the ranks of the gurus, we lose you somewhere. Engineer Vishnu Kumar Sharma did his bachelor's, master's and doctorate, all 3 at this institute. So he has to be cheered, and he is still a part of this faculty in the institute. If we have missed out anybody from our batch, I would like you to let me know right now. Are we done?
Okay, somebody remembered. Kala boss, please on the stage. Please. आप नाम बोल दो बस. Okay, my privilege and honor to introduce my friend Gurdev Singh. We just heard about him earlier on from Rakesh Yadav. We used to call him LPR. There are two things. One, LPR stands for London, Paris, Rome, because he is son of illustrious Jasdev Singh. So we used to get a lot of mementos, you know, World Cup ka ball ye hai, his hockey team ka ball ye hai, and all that. And also another meaning of LPR was long playing record. Once you give him the mic, it's very difficult to get him away from it. So that's it. Thank you so much. Thank you very much, respected Gurudev Singh Soin Bose and Sri Vidyakant Kala Bose for introducing your batchmates for felicitation. Now an announcement. आप सब लोगों के लिए अभी सिल्वर जुबली बैच फेलिसिटेशन स्टार्ट होगा. आप लोगों के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था भी की है, जस्ट इस स्टैंड के बाहर से ही. आप अपने व्हीकल से जाएं, ई रिक्शा से जाएं, जैसे आपको उचित लगे. विनोदनी हॉस्टल में आप सब लोगों के लिए लंच की व्यवस्था की गई है. लंच स्टार्ट है. आप वहां जा सकते हैं, अभी ले सकते हैं. आप रुकना चाहते हैं रुक के जा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है. विनोदिनी हॉस्टल नियर पीजी हॉस्टल, स्ट्रेट रोड फ्रॉम मेन गेट से जो सीधा रोड जा रहा है दैट गोज टू विनोदिनी हॉस्टल. सबके लिए लंच की व्यवस्था है. अब सिल्वर जुबली बैच का फेलिसिटेशन प्रारंभ कर रहे हैं. सिर्फ टोकन कर जाओ. टोकन, ओनली टोकन, ओनली टोकन. हाँ. नाउ again it will be branch wise. I invite Mr. Ashish Dutt Sharma, founder, director and principal of Vedikul Gurukul and Gurukul Institute of Engineering and Technology. He has wrote more than 50 books, 2 times Guinness World Record holder, present refreshment secretary of our alumni association, and मेरा छोटा भाई डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा उर्फ एडीएस. काइंडली मैं पहले निवेदन करता हूं डायरेक्टर सर से, आशीष दत्त शर्मा को फेलिसिटेट करें. आशीष दत्त शर्मा फ्रॉम मैकेनिकल. ही डिड हिज बीटेक, एमटेक एंड पीएचडी फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट. Now, I request Ashish Dutt Sharma to start the felicitation of Silver Jubilee batch. दोस्तों, I will not take much time. I, Dr. Ashish Dutt Sharma, on the behalf of 93, 97, 98 Silver Jubilee batch, would like to thank Director MNIT. हमें इस कॉलेज ने एक चीज सिखाई थी, हमारे टीचर्स ने सिखाया था कि कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबेत से उछालो यारो. और सर मैं कहना चाहूंगा 25 साल बाद हम आसमां में सुराख करके ही आए हैं. मैं आर्किटेक्चर बैच से चाहूंगा कि ये एक बार लाइन हो जाए. अंकुर शाह, अरविंद प्रताप सिंह, आशीष जैन, भूषण कुमार, किशन लाल खांडा, श्यामा गुप्ता ऑर्डर लिया है. अरविंद प्रताप सिंह पहले. हाँ, और मैं चाहूंगा आप अपनी फैमिलीज के साथ आए, जल्दी बुला लीजिए. आशीष पहले, अरविंद प्रताप सिंह, भूषण कुमार, किशन लाल खांडा, श्यामा गुप्ता, मनीष कुमार शर्मा, मनोज विश्नोई, निशान दास,
शालीन कुमार अग्रवाल, सुभाजीत बसु रॉय, सुमित अग्रवाल, सुनील कौशिक एंड हमारा प्रिय वीरेंद्र गर्ग। प्रिय सारे ही हैं। मैं चाहूंगा केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी लोग, दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग भी स्टेज के जल्दी नजदीक आ जाएं। और मैं आर्किटेक्चर ब्रांच के लोगों से कहूंगा अपना फेलिसिटेशन करा के बाहर नहीं जाएं, आप अपने ग्रुप फोटोग्राफ भी कराएंगे, नीचे आप स्टेज पे रहें। हाँ, क्षमा गुप्ता मैम आइए। मनीष कुमार शर्मा, मनीष नहीं आया है। मनोज, हाँ निशांत, हाँ राधेश्याम प्लीज कम ऑन स्टेज। मैं चाहूंगा हमारे भाई शालीन कुमार अग्रवाल, अभिजीत बसु रॉय, हाँ शुभजीत बसु रॉय, सुमित अग्रवाल, सुनील कौशिक एंड वीरेंद्र गर्ग, रवि सर। मैकेनिकल ब्रांच से अभिषेक उपाध्याय अपने पेरेंट्स के साथ प्लीज। अभिषेक उपाध्याय, केमिकल ब्रांच से आबिद हुसैन, आलोक खरे, अतुल नागपाल, भरत गुप्ता, दिनेश, डॉक्टर मनीष वशिष्ठ, मोहित जैन, प्रीति जौहरी, रघुवीर सिंह ढाका, राजीव लखनपाल, संदीप तोशनीवाल, संजय अग्रवाल एंड विशाल भटनागर प्लीज स्टेज के पास आ जाएं। आबिद, आलोक, अतुल, भरत, दिनेश, डॉक्टर मनीष, मोहित, प्रीति, रघुवीर, राजीव, संदीप, संजय अग्रवाल एंड विशाल भटनागर प्लीज आप स्टेज के पास रहे। मैं आर्किटेक्चर ब्रांच के सभी से कहूंगा कि स्टेज के नीचे ही रहे, हम लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ जरूर लेंगे। मनोज बस सर आओ मेरे साथ, अब हमारी हेल्प करो यार। अरे एक फोटो लेना है। अच्छा ये तो हो ही गया। अभिषेक भाई तो बोलो। चेले को बोलना पड़ेगा आपके साथ। हाँ अरे हाँ, मैकेनिकल से अभिषेक उपाध्याय का आप, मैकेनिकल से अभिषेक उपाध्याय के लिए, अभिषेक उपाध्याय मैकेनिकल। अभिषेक
आर्किटेक्चर का ग्रुप फोटोग्राफ के लिए प्लीज आप स्टेज के पास आ जाए। अब वीरू भाई पढ़ो। केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से आबिद भाई, आबिद हुसैन, आलोक खरे, आलोक, अतुल नागपाल भाई। तालियों की आवाज जोरदार होनी चाहिए। भरत गुप्ता, दिनेश, डॉक्टर मनीष, सही है, मोहित जैन, प्रीति, प्रीति जौहरी, रघुवीर सिंह ढाका, राजीव लखनपाल। राजीव भाई आवाज जोरदार होनी चाहिए। हाँ, प्रीति, प्रीति नार्वेकर। अच्छा, एक ही बात है। संदीप तोशनीवाल, संजय अग्रवाल एंड विशाल भटनागर। नहीं आए, चल। मोहित भाई सही रहा, सही रहा है सब हमारा। अरे यार, बीवी परेशान करती, मैं उससे बात नहीं करता तो मैं लिखता ही रहता था। रिकॉर्ड हो गया? नहीं नहीं भाभी, पहले की बात थी। मतलब ये है ना, प्रीति शादी का बड़ा संघर्ष किया, तो ये रास्ता ही ठीक लगा। पढ़ना पड़ेगा। सिविल ब्रांच, सिविल ब्रांच संजय। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अतुल नागपाल, भरत गुप्ता, दिनेश आए ना, दिनेश, दिनेश मांडावला, डॉक्टर मनीष वशिष्ठ, मोहित जैन, प्रीति जौहरी नार्वेकर, रघुवीर सिंह ढाका, राजीव लखनपाल, संजीव, संदीप तोशनीवाल, संजय अग्रवाल। नहीं मैंने कर दिया। हाँ, ये ऑर्डरली है। सिविल ब्रांच अनामिका, आशुतोष भारद्वाज नहीं है, बुदाता विजय कुमार, डॉक्टर नितिन गोयल, डॉक्टर नितिन गोयल, जगत नारायण मंडल, कुमार अभिनव, कुमार अभिनव, मनीष मंगल, नीरज गुप्ता, नीरज, प्रताप, राजीव कालरा, राजेंद्र सिंह सहरा, राजेश तिलोड़ा, राजेश तिलोड़ा, संदीप बंसल, संजय वांगड़ी नहीं आया सर, संजय जिंदल एंड सुरेश चंद मीना। अच्छा सिविल से ना, अनामिका। अब आपका योगा से बहुत दर्द भी नहीं, हम मेहनत ये नहीं। अनामिका तो बहुत अच्छी ट्रेनर है। हाँ, ये संजय भाई है। हाँ हाँ, एक वन वर्ल्ड नेबर थे हमारे, हमने बहुत संघर्ष साथ ही देखा। एक इनका अनामिका, एक मिनट इनका ग्रुप फोटोग्राफ करवा लेंगे अपन, है ना, फिर अपन फिर सिविल का हो जाएगा अपना। एक, हाँ सिविल हो गया ना बस।
Next branch will be electrical. Next branch will be electrical. Electrical guys, please come near to stage. अमित भाई, अमित गुप्ता जी, इकट्ठा करिए अपने भाई लोगों को. ये अपना सिविल है, आर्किटेक्चर अभी सिविल. हाँ, केमिकल, हाँ केमिकल ब्रांच से जो भी है स्टेज के पास आ जाएं. एक ग्रुप फोटोग्राफ हो जाएगा. एक मिनट अनामिका स्टार्ट करते हैं हम. एक मिनट सिविल वाले. Now civil branch, Anamika Singh. Shri Vishwas Jain Bose, Director CEG and Member Board of Governor. Please stage पे आने का कष्ट करें. श्री विश्वास जैन बोस. अनामिका सिंह. बुदाता विजय कुमार. डॉक्टर नितिन गोयल. जगत नारायण मंडल. अब पूरा फोटो मिल जाएगा जगत, मैं भेज दूंगा, टेंशन मत. बहुत अच्छे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं. अच्छा मिल जाएगा आपको, मैं दे दूंगा. हाँ अरे पूरा. हाँ ठीक है. भाभी साथ जाओ. भाभी नीरज गुप्ता. नीरज गुप्ता. राजीव कालरा. अब हाँ, ग्रुप फोटो के लिए सिविल ब्रांच प्लीज स्टेज के पास आ जाइए. भाइयों तालियों की आवाज आ नहीं रही है. मनीष मंगल. नीरज गुप्ता. नेक्स्ट विल बी राजीव कालरा. बस सिविल ब्रांच वालों को यहाँ इकट्ठा कर लो जब तक. हाँ राजीव कालरा. अरे ऐसे थोड़ी चल सब ऐसे. और बेटा कहाँ? राजेंद्र सिंह सहरा. राजेंद्र भाई आगे आ जाओ. आप यहाँ तक आ जाओ. जैसे हो ना स्टेज से निकल जाना. अरे तुम्हारा अच्छा फोटोग्राफर साथ लाए. हमारा बंद करवाए थे. राजेंद्र सिंह सहरा. नेक्स्ट विल बी संदीप बंसल. अरे बिल्कुल संदीप बंसल. संदीप बंसल. नेक्स्ट विल बी आवर फेवरेट संजय जिंदल. बॉस तालियां तो बनती है. सुरेश भाई.
नेक्स्ट विल बी सुरेश चंद मीना. नाउ इलेक्ट्रिकल ब्रांच अमित भाई. फ्लैग बियरर अमित गर्ग बॉस है हमारे. अमित गर्ग, अमित गुप्ता जी आगे. अनीता बंसल, अरुण ठोलिया, नहीं इलेक्ट्रिकल. अशोक मित्तल. हाँ यहीं पे. इसमें कौन कौन आए हुए हैं इसमें बताओ. अरुण ठोलिया है और ये अशोक मित्तल है, मिश्रा और किरण. हाँ 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 हाँ. संजय कुमार नहीं आया. हाँ 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 हाँ. ठीक है. हाँ हाँ. क्या हुआ? राजेंद्र सिंह सहरा का अगर किसी के पास अपना एक बार देख लीजिए, मोमेंटो चला गया हो तो वापस अब चेंज करवा लीजिए यहाँ से. सिविल के ग्रुप में देख लीजिए. एक मिनट. क्या अमित अमित गर्ग. अमित गर्ग भाइयों, तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए और हमारा नंबर आएगा तो कोई बजाएगा नहीं वरना. अमित गुप्ता. नेक्स्ट विल बी अमित गुप्ता. ये बॉस इनको यहीं रोकना, अपन को यहीं लगवा लेना. वापस जाओ. टेक्निकल सबको रोक रखना. नहीं इलेक्ट्रिकल को. अनीता नहीं है. अमित. अरुण ठोलिया फैमिली का है. अच्छा. अशोक मित्तल. मिश्रा जी. विनोद आनंदा मिश्रा जी. डॉक्टर नवीन जैन. किरण. किरण. महिमा साराभाई. मनी मोहन. और फैमिली साथ आइए. और ये तो हमने अर्न किया है 25 साल में, और वो भी आसमां में सुराग करके. हाँ. गोल्डन जुबली और सिल्वर जुबली के जो हमारे लाइफ एलुमनाई कार्ड हैं वो काउंटर नंबर 1 पे वो प्लीज लेके जाइएगा. हाँ वाइफ को बुलाइए. फैमिली को देखिए, फैमिली के साथ आइए. एक नेक्स्ट. अशोक मित्तल इज नेक्स्ट. विनोदनी मिश्रा. विनोद आनंद मिश्रा. डॉक्टर नवीन. महिमा सारा भाई. अच्छा. मनी. अच्छा. मंजुल मयंक. मंजुल. मीताधर. पवन गुप्ता. पीयूष वर्मा. प्रियोव्रता. राजेश बुनकर. आप लोग स्टेज के पास ही रहना. ग्रुप फोटोग्राफ. अपनी फैमिली के साथ आइए. नेक्स्ट इज किरण. नेक्स्ट इज महिमा साराभाई. नेक्स्ट वन इज मनी मोहन.
दो बार बता तेरा केस में कहाँ पे आएगा। एक इलेक्ट्रॉनिक्स है भी, कहाँ पे है, एक मिनट बता दो कहाँ पे है। निश्चल और अंजुल का कहाँ, अंजुल नहीं प्लस निश्चल और रहा है। ठीक, मंजुल मयंक, मीताधर, नेक्स्ट विल बी मीताधर, इलेक्ट्रिकल ब्रांच। हाँ हाँ, एक एक सिंगल आपका ये फोटोग्राफ मिल जाएगा, हम पर्सनली नहीं एक अरे सवाल ही नहीं। अच्छा पवन गुप्ता जी, नेक्स्ट वन इज मीताधर, अरे नहीं ये तो नेक्स्ट वन इज पवन गुप्ता। पीयूष भाई, पीयूष गुप्ता नहीं है, पीयूष शर्मा, पीयूष फैमिली का है। अरे यार अगली बार चलो 5 साल में जरूर करेंगे यार, 5 साल में कर देना यार। 200 अरे यार राजेश भाई तुम्हें पता है ना। हाँ पीयूष वर्मा, अरे अपन बुलाएंगे इन सबको, आपकी बार मिलके करेंगे, मिलके करेंगे। अरे यार नेक्स्ट वन इज प्रियोव्रता भाई, फैमिली का है, हमें आज तुमकी फैमिली। रितेश तिवारी, सचिन अग्निहोत्री, संदीप टीना, संजय कुमार, संजीव गुप्ता, शालिनी सिंह। किसका इसमें है नहीं यार। हाँ मैं मनोज का नाम एक्स्ट्रा ले लूंगा। हाँ फिर इसके बाद हाँ ठीक है अभी रोन दो बस। हाँ ठीक है, इनके राजेश बुनकर भाई के पास। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से लूँ या वहाँ जाऊँ? अच्छा ठीक है, आ जाओ। कहाँ तक आ जाओ? योगराज मीना तक आ गए। संजीव गुप्ता, शालिनी सिंह, सोनल गुप्ता, टी श्याम प्रसाद, तेजस शाह, उमाशंकर वर्मा, विनोद अडा एंड योगराज मीना एंड मनोज। एक और था ना, मनोज श्रीवास्तव जी। ब्रांच में लिखना। नाउ रितेश तिवारी, हो गया ये लो। नेक्स्ट वन इज सचिन अग्निहोत्री, चंद्रशेखर इलेक्ट्रिकल, प्लीज कम ऑन स्टेज। सचिन अग्निहोत्री चला क्या? संदीप टीना, यार मनोज लिया ना तुम्हारा नाम ये रहा। हाँ तुम्हारा नाम था नहीं लिस्ट में, बड़े काजू की बात है यार, मैंने पेन तो तुम्हारा उसी दिन मंगवाया रेडियो बेच के। संजीव गुप्ता, संजीव भाई। श्री आर के अग्रवाल बोस, मेंबर पीएसी, निवेदन करता हूं मंच पर आए। श्री आर के अग्रवाल बोस, परमानेंट एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एलुमनाई एसोसिएशन। शालिनी सिंह, भाइयों ताली की आवाज रुक गई है। सोनल गुप्ता, टी श्याम प्रसाद,
तेजस शाह, तेजस गए। उमाशंकर वर्मा, उमाशंकर। विनोद अड्डा भाई, अच्छा आ गए ना अब तो। विशाल माथुर नहीं, योगराज मीना। अभी संजीव गुप्ता जी हैं। हाँ संजीव गुप्ता। शालिनी गई है, सोनल है, नहीं शालिनी है, शालिनी है अभी। हाँ जाइए। हाँ तो आपको खड़ा कर रखा बिल्कुल वहाँ पे। हाँ तो आपने काम ही ऐसे किए थे बचा के। हाँ। सोनल गुप्ता, सोनल गुप्ता। टी श्याम प्रसाद हो गया। अच्छा ओके, टी नहीं है ना, टी श्याम प्रसाद। अच्छा गए ना टी श्याम प्रसाद। देन उमाशंकर वर्मा अकेले अच्छा है ना भाभी। भाई विनोद भाई के लिए ताली तो बनती है। नेक्स्ट वन विनोद अड्डा। योगराज मीना जी। मनोज श्रीवास्तव। लेकिन मनोज भाई आपका डेट कैसे हुआ? पता आशीष का मैसेज आया वाला तो यार पेन की है तो वो लड़का कौन तो दूसरी समय देते हैं ना। अच्छा वो फिर मैं आपको दूंगा, फिर रात को तो मिली नहीं। मिस्टर मनोज श्रीवास्तव, अगर ये मोमेंटो का हो ना टाइम से पहुंच जाएगा। गोल्डन के आरोग्य गलती से मिस्टर मनोज श्रीवास्तव। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन आशीष अरोड़ा, अपनी गैंग को लेके आइए और आवाज आनी चाहिए। चंद्रशेखर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। आशीष, आशीष प्लीज, नहीं कर दिया बस। आशीष अरोड़ा प्लीज कम ऑन स्टेज। बस ये आशीष से। हाँ जैसा अजय गर्ग, अजय गर्ग इसमें टिक लगाते जाओ है ना। अजय गर्ग दिख नहीं रहे, कहाँ है? हाँ एक आशीष भाई इनमें ये देख लो कौन कौन है, ठीक है, और क्रॉस कर दो। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जो अपने एलुमनस हैं वो प्लीज स्टेज के पास आ जाए, ग्रुप फोटोग्राफ हो रहा है। इस पर टिक क्रॉस हो नहीं, लेकिन अच्छा तो एक बार थोड़ा देख लो, दिख रहे होते हैं। अजय कुमार शर्मा, आलोक कुमार सिंघल, अनुराग विजयवर्गीय, आते जाओ यार। आशीष भंडारी सीक्वेंस में, दीप राहुल, दिलीप जोशी, गुलाब चंद जिंगर, जगदीश मेघवाल, तूर भैया लखवीर सिंह तूर, नीरज जैन, निशीत मिठरवाल, पंकज गोयल, परमेश्वर सोनी, पवन कुमार अग्रवाल, राज मोडिया, राज साहा, राजेंद्र कुमार गुडेश्वर, राजेश खंडेलवाल, राजेश मौर्य, राकेश अग्रवाल, रामाचंद्रन पी, रामविलास पैरवा, संदीप अग्रवाल, शुभ्रता बर्मन, शुभ्रता लोध, सोनल बोडिया, तरुण माथुर, वेंकट मोगली। करना है क्या? तो नहीं आए। कौन नहीं है?
सभी हैं, बस एक नहीं अजय पराग सब अच्छा आगे नहीं नहीं सब नहीं है ना इसमें, अवेलेबल नहीं है ना सब। चलो जो है उनको क्रॉस करते हैं। अजय शर्मा नहीं है, सब है, पराग नहीं है, मोडिया नहीं है, कोडेश्वर है, राजेंद्र है, राजेश भी है, सब है, रामचंद्र सब है, सारे हैं, सुनील नहीं है, बाकी सारे। नाउ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, मिस्टर अजय गर्ग. नेक्स्ट वन विल बी अनुराग विजयवर्गीय. भाई तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए. अनुराग विजयवर्गीय. नेक्स्ट वन विल बी आवर फेवरेट आशीष अरोड़ा. भाई बहुत मेहनत की है, आवाज जोरदार होनी चाहिए. आशीष भंडारी. आशीष भंडारी. नेक्स्ट वन दीप राहुल. आशीष स्टेज के पास ही, आशीष स्टेज के पास है ना सबको. नाउ दिलीप जोशी. भाई तालियों की आवाज. नेक्स्ट वन विल बी मिस्टर गुलाब चंद. फैली. अच्छा अरे वाह. नाउ आवर फेवरेट जगदीश मेघवाल. अच्छा बस आ जाओ. टूर लखवीर सिंह टूर. नीरज भाई. नीरज जैन. नीरज जैन. ठीक है. नेक्स्ट वन निशित मिठारवाल. और पंकज भाई. हाँ. भाभी बच्चे हैं पंकज. अच्छा बच्चे. अच्छा now पंकज गोयल विथ फैमिली. भाइयों ताली की आवाज जोरदार. परमेश्वर. अरे यार परमेश्वर. अरे यार भाभी का नाम. अब परमेश्वर सोनी एंड तरंग भाभी. भाई जोरदार तालियां. पूरे 2-3 कॉन्टिनेंट पार करके आए हैं. पवन कुमार अग्रवाल. आईएएस ऑफिसर पवन कुमार अग्रवाल. भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए.
प्रकाश प्रकाश नहीं आएगा? प्रकाश भंडारी नहीं है, नहीं है। अच्छा, राज शाह ना, क्या बोलना तेरे लिए? हाँ हाँ। नाउ भाई ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राज शाह जो राज कर रहे हैं यूएसए पर। अच्छा राइंदर आप जाओगे आगे, आप तो इधर ही आओ, बस हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक में मदद करो। अब आप बताओ इनके लिए अगली, राइंदर गुडेश्वर का नाम अब आप बोलो। राजेंद्र कुमार गुडेश्वर रेलवेज में छाए हुए हैं। राजेश खंडेलवाल, और इनके बारे में क्या बताएं, पूरे अमेरिका में राज कर रहे हैं। पहले यहाँ पे वायरलेस में पूरा डुबो के इंडिया को गए और अब वहाँ बखूबी से ये जिम्मेदारी इनको दी है अमेरिका को डुबोने की। राजेश कुमार मौर्य एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में दिल्ली में पोस्टेड हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, दिल्ली की जितनी भी फ्लाइट्स हैं उनकी लैंडिंग परमिशन इनसे मिलती है। तो जब फ्लाइट लेट हो जाए तो इसको 2 गालियां जरूर दे दें। आवर टॉपर राकेश कुमार अग्रवाल आईपीएस। भाई आसमां में सुराग इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने थोड़ा ज्यादा ही किया है। रामचंद्र, अच्छा रामचंद्र नहीं, अच्छा रामविलास, अच्छा इससे एक हम भी किताब है। तुम आ जाओ। अच्छा किसको देना है? तुम चलो। रामविलास। नेक्स्ट वन संदीप अग्रवाल। संदीप भाई यही रुकना, एक सेकंड ऐसा ना, वो क्या मूवमेंट को क्या है, लाइंस तो अरे वो तो तुम लॉर्ड थे आगे यार। संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट वन शुभा बर्मन। शुभा बर्मन। नेक्स्ट वन विल बी शुभा बर्ता लोध। भाई तालियों की आवाज इलेक्ट्रॉनिक्स वालों। नेक्स्ट वन सोनल बोरदिया। भाइयों ताली की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। सोनल बोल दिया, भाई ताली जोरदार होनी चाहिए। तरुण माथुर। अरे भाई तरुण। नेक्स्ट ब्रांच विल बी मैकेनिकल। भाइयों पास आ जाइए और दमदार तरीके से आइए। Now, one
इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच प्लीज राइट साइड में स्टेज के कॉर्नर पर एक बार जाएं सभी एलुमनाई। आपको गलती से गोल्डन जुबली का एक मोमेंटो दे दिया गया है, प्लीज वो बॉक्स जो व्हाइट वाला है वो एक्सचेंज कर लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक्स प्लीज, वो स्टेज के कॉर्नर पर स्टूडेंट है, आप अपना एक व्हाइट बॉक्स है वो एक्सचेंज कर लीजिए, उससे गोल्डन जुबली का लौटा दीजिए, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। यदि गलती से किसी और को भी मिल गया हो, आशीष दत्त को बता दीजिए, वो एक्सचेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स को गलती से सभी को वो चला गया है, प्लीज प्लीज चेंज कर लीजिए। एंड नाउ मैकेनिकल ब्रांच, ओवर टू आशीष। मैं अभी व्हाट्सएप कर देना। अभिषेक उपाध्याय, ये इनको आप गोल्डन जुबली का दे ही देते हैं, सिल्वर का तो ले गए हैं ये। अब अभिषेक मेरी हेल्प करेंगे यहाँ पे। अचल गुप्ता, भाई अचल के लिए जोरदार तालियां, हमारे बैच का रैंक जो था ये। अचल गुप्ता, अनिर्बान मुखर्जी, हाँ, किशोर कुमार ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अच्छा मन्नाडे बोले, मन्नाडा, और क्या बात है। अंजना, हाँ, अंशुमान माथुर, अनुपम सिंह सिरोही। भाई वो ताली की आवाज देखो यार, ये तो जुल्म हो रहा है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर गुप्ता, चंद्रशेखर गुप्ता, जंदू से हिल नहीं रहा हो। नाउ अवर फेवरेट डीएसआर दीपक सिंह राजपूत। मेरा रह गया यार। नेक्स्ट डॉक्टर आशीष दत्त शर्मा। अरे वाह। और वेडीएस जान ऑफ द मैकेनिकल। अरे वाह। तो ये संभाल लेना, इसके बाद मैं इन्हें ले जाता हूँ ना। नहीं नहीं सब नहीं, अरे वो तो अंजना का हस्बैंड है यार, जाएगा वो तो यार। उसको अलाउड है यार, उसको अलाउड है। नहीं नहीं आगे तुम्हारा आ गया ना, बस अभी होल्ड कर लेना, इसके बाद ठीक है। गुरप्रीत सिंह अरोड़ा तो होल्ड कर देना यहाँ तक, फिर जैसे ही मेरा हो जाए तो बुला लेना। तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए भाई लोग। पहले पहले शुरू तो नहीं नहीं दीपक तेरे बाद है मेरा, तेरी मोमेंट तो बदल जाएगी। मेरा बस इसके बाद ही बहुत, आप वहीं रहना। डॉक्टर लगने से मेरे नीचे आ गया ये देखो। मेरे ऊपर था और कर दी भाई, दाल रोटी उसी से चल रही है। चंद्रशेखर गुप्ता, दीपक सिंह, आशीष, गुरप्रीत सिंह अरोड़ा, जस्सी भट्ट कपूर, ज्योति कौल, के.एस. चंद्रशेखर, ललित भाई, ललित मोहन सरस्वत, लोकेश सैनी, मनोज कुमार चौधरी, मनोज कुमार चौधरी,
भाई हमारी मातृशक्ति जस्सी, ज्योति और अंजना, इनके लिए ताली की आवाज तो होनी चाहिए। मनोज कुमार चौधरी, मनोज कुमार चौधरी, मनोज कुमार चौधरी नहीं होगा। एक मिनट कहाँ तक आ गया अपन? लोकेश तक आ गए ना? ठीक है, लोकेशन नहीं, ठीक है, हाँ नहीं लेना, ठीक है। नीले कहाँ है? अच्छा नीले सही हो गया पापा मम्मी का? अरे ठीक है, स्पेशल टाइम पे हो गया, बहुत लेट हो गया। अरे नहीं समझ गया यार, डायरेक्टर साहब ने कोई से यार आउट ऑफ टर्न क्या हुआ, आउट ऑफ टर्न क्या हुआ, मैंने कहा सर भाई थैंक यू। नाउ ललित सारस्वत, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी। ये कहां से सीखी इसने? ललित सारस्वत। नेक्स्ट वन विल बी लोकेश सैनी एंड फैमिली। बस लोकेश, हाँ मनोज नहीं है। नीलेड एमबी, डिजाइनर ऑफ थार एंड एक्सयूवी 700 एंड स्कॉर्पियो। भाई लोगों जो बढ़िया कार लेके घूमते हैं उसमें हमारे नीले का हाथ है। एंड एक्सयूवी 1000, 2000, 3000, 5000, एवर्ट 5000। नितिन जैन, और रॉक स्टार नितिन जैन, भाई तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। एंड कोमल जैन। नेक्स्ट वन विल बी परस श्रीवास्तव, पॉल उकेन, आवर रिक्रूटर। पॉल ने इस कॉलेज में आके प्लेसमेंट दिया और हमारे बच्चों को लिया, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कभी भी कंपनी में कोई जॉब हो तो प्लीज अपने कॉलेज में आइए। नाउ अवर चौधरी प्रहलाद किशोर चौधरी, अपना मुंडा। नेक्स्ट वन विल बी परस श्रीवास्तव, नहीं परस, पॉल हो गया, अब आएगा पॉल। थैंक यू यार, तुमने रखी बात MNIT की। अरे थैंक यू बस। नेक्स्ट वन विल बी पॉल उकेन, पुनीत मोहन, राजीव जैन, राजेश रोनियर, अवर स्मॉलेस्ट गाय साजिद साइमन। इनको देख के हम सिर उठा के चलना सीखे हैं। प्रहलाद किशोर, भाई तालियों की आवाज। हाँ हाँ बोलो, हाँ। अभी 9 का आगे आएगा ना एंड पे ला लेंगे ना, नहीं लास्ट में भेजेंगे उसने। ये भी तो नहीं बताया ना 15 को 25 को कौन आएगा, नहीं लेकिन कर देंगे। हाँ। पुनीत मोहन, ओहो 1 मिनट रोकना पड़ेगा यार। हाँ। राजीव जैन एंड फैमिली। नेक्स्ट वन विल बी राजेश रोनियार, ए लकीएस्ट फादर। अभी भाई की जो डॉटर है उसके शायद 1 महीना और 2-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन फिर भी इस मीट के लिए आया है नेपाल से। साजिद साइमन, tallest link of the branch in the country, I think tallest engineer in the world है। हाँ। संजीव मोहंती, सौमित्री चौधरी, शैलेश मंगल, शैलेश जोशी,
our favorite one शैलेश जोशी, शंभू प्रसाद चौधरी, शंभू भाई, सुनील भट्ट, सूरज, our रॉक स्टार सूरज नहीं है, सुरेंद्र सिंह मौर्य, विनय मिश्रा, ऐसे रखते हैं ना, शैलेश मंगल, our rock star from Gujarat, शैलेश जोशी, मतलब अभी आया ही नहीं है, अभी कल आया वो भी, उसको बहुत ही यार, मतलब उसको भी बहुत, उनके भी रेजिस्टेंसेस बहुत हैं सबके। शंभू प्रसाद चौधरी फ्रॉम नेपाल, शंभू भाई विद फैमिली। सुनील जस्सी को बुला लो वापस, सूरज नहीं आया। नेक्स्ट वन विल बी सुनील भट्ट, नहीं मोरे है ना, फैमिली के साथ है तो। नेक्स्ट वन विल बी सुरेंद्र सिंह मौर्य विथ फैमिली, देन विनय मिश्रा, विनोद एन, विवेक गर्ग एंड विवेक कपूर, यश मेहता एंड योगेश शाडा एंड नारायण लाल जैन। अरे आप अभिषेक भाई हमारा पूरा। Next one is Vinay Mishra, then Vinod N. नारायण आप हमारे साथ आओगे लास्ट में, ये ना, हाँ अपन साथ चलेंगे, मैं लेके चलूंगा साथ में आपको ना। विवेक गर्ग, विनोद एन, भाभी कहाँ है? क्यों? अरे यार सब थक गए होंगे भाई। अवर विवेक गर्ग के लिए भाई तालियां तो बजती है। विवेक कपूर, विवेक कपूर भाई। नेक्स्ट अंकल सैम फ्रॉम यूएसए, विवेक कपूर। देन टॉपर यश मेहता एंड फैमिली, मैकेनिकल टॉपर अलॉन्ग विद अचल, योगेश नहीं है, योगेश शाडा। अपना नाम ही नहीं दिया, 25 वाले में भी नहीं दिया, मैंने कितने कहाँ दिए, किसको दिया? जो फॉर्म फिल किया था उसको। नहीं कोई बात नहीं, सबमिट नहीं कोई बात। योगेश शाडा एंड लास्ट वन नायलाल। नेक्स्ट ब्रांच विल बी मेटलर्जी, और बात अधूरी रह जाएगी अगर हम डॉक्टर राजेंद्र दुचानिया भाई के बारे में नहीं बोले। और मैं अभी इस स्टेज से मैं हमारा जो बैच है उसकी तरफ से मैं राकेश सर, मैं हमारी अच्छा ग्रुप फोटो एक मिनट नहीं बोलेंगे अपन शिरीष के लिए, हाँ बिल्कुल, इसके बाद वहीं खड़े होकर करते हैं ना। शिरीष भाई हमारे बीच नहीं है लेकिन वो हमें देख रहे होंगे, तो शिरीष भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां भाइयों। एंड शिरीष विल रियली लव यू भाई, तुम्हें भूल नहीं सकते हम कभी। हाँ ग्रुप फोटोग्राफ के बाद मेटलर्जी स्टार्ट करेंगे, लेकिन राजेंद्र दुचानिया भाभी हैं यहाँ पे, मैं चाहूंगा स्टेज पे है, और सुनीता आप उनको प्लीज उनको है ना यहाँ लेके आए स्टेज पे।
आइए भाभी। ये तो वही रोकवा रहे हैं। ग्रुप फोटोग्राफ फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, आप आइए, आइए स्टेज। मेटलर्जी डिपार्टमेंट को हम लोग मिस्टर राजेंद्र दुचानिया से स्टार्ट करेंगे। प्लीज कम ऑन स्टेज और ये स्टार्ट करें। और भाभी आपको कहना चाहते हैं, सिर्फ एमएनआईटी एमएनआईटी नहीं, पूरा बैच आपके साथ खड़ा हुआ है। आप हिम्मत रखें। और भाई लोगों, राजेंद्र भाई हमारे बीच में नहीं है, लेकिन कोविड के समय उन्होंने इस कॉलेज के और कॉलेज के स्टूडेंट्स की बहुत सेवा की है। तो तालियों की आवाज के साथ कहीं ना कहीं राजेंद्र भाई हमें देख रहे होंगे, रुकनी नहीं चाहिए। और एक स्टैंडिंग ओवेशन तो प्लीज भाई लोगों खड़े होके कम से कम, बड़ी हिम्मत रखी है इस परिवार ने। और फिर कहते हैं भाभी हम सब लोग आपके साथ हैं, ये हमारा एक्सटेंडेड परिवार है और हम खड़े रहेंगे इनके साथ। और राजेंद्र भाई हमेशा जब भी बात करते थे इस सिल्वर जुबली के लिए, कहते थे यार अपन बड़े जोश के साथ मनाएंगे। तो ये जोश हम उनको दिखाई देते हैं आज, कि आज भी वो जोश हमारे में जिंदा है। और पंडेल सर के लिए कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल परिवार में जैसे एक गार्जियन होते हैं वो और राजेंद्र सही में उनको बहुत प्यार करता था। मेरा तो बहुत साथ निकला, बीटेक साथ की, एमटेक साथ की, पीएचडी साथ की, हर जगह जब भी हम मिलते थे तो बात करते थे। तो मैं बता नहीं सकता हम लोग कितने, मतलब छोटी छोटी यादें हर कोने में मुझे, मतलब हम ना कुछ रुका हुआ है हमारा। और भाभी फिर कहेंगे हम सही में आपके साथ हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और एमएनआईटी जागी तरफ से तो जो है वो हम करेंगे आपका। और मैं आपसे भी कहूंगा कि यार जब भी आपको लगे कुछ, तो हमारे 2 बच्चे हैं और हमें उनके साथ खड़े होना है। Now metallurgy branch, अंजू मित्तल एंड निश्चल अरोड़ा। निश्चल का साथी, हाँ दोनों साथ, हाँ अंजू मित्तल एंड निश्चल अरोड़ा मेटलर्जी ब्रांच। देन अर्पित द्विवेदी, आशीष दिडवानिया, हाँ आप दोनों, हाँ हाँ जाओगे। आशीष अग्रवाल, चंचल जैन, हीरा चंद जैन, हीरा कृष्ण मोहन, मनीष वीटी, आवर फेवरेट मनीष दंगाच, मुरुगन राजेंद्र दवे, मुकुल अरोरा,
हाँ आशीष डिडवानिया, then Ashish Agarwal. Next one will be Chanchal Jain, our favorite Chanchal Jain. Chanchal Jain. Then Hirachand Jain. वो क्या उधर बन जाएगा, गलती नहीं होगा. हाँ हाँ. Then Kishan Mohan. Manish VT will be next. हम चलेंगे, आप संभाल लेना. Manish VT. Next one, Manish Dangaj, our ऑपरेशनल ग्रुप कोऑर्डिनेटर, हमारी जान. मनीष ने बहुत मेहनत की है भाई लोगों. मृगांक राजेंद्र दवे, फॉलोड, हेलो, हाँ, विथ फैमिली. मुकुल अरोरा. नेक्स्ट वन विल बी मुकुल अरोरा. नवनीत मेहता. नेक्स्ट वन विल बी नीलू सोनी. भाई लोगों ताली आवाज जोरदार होनी चाहिए. और अर्पित तो नहीं बनी, अर्पित तो नहीं बनी. आकाश, आकाश. नेक्स्ट वन विल बी नीतू सिंह. हाँ बस मेटलर्जी. पंकज शर्मा, प्रशांत श्रीवास्तव, राजेंद्र सिंह चौहान, समित छजलानी नहीं आए, सीमान जैन. सीमान भाई आप आओ. तौकीर हुसैन और नहीं है. अच्छा और कोई रह गया हो मेटलर्जी से? दो जने. किशन जैफ, आशीष, किशन जैफ, हाँ, अशोक करोड़िया ना. पंकज शर्मा जी. नेक्स्ट वन विल बी प्रशांत श्रीवास्तव.
भाई प्रशांत के लिए जोरदार तालियां। राजेंद्र सिंह चौहान। सीमांत अकेली है? अच्छा। नेक्स्ट वन सीमांत जैन। नहीं आया, नहीं आया। क्या चीज? ये आपने कहीं और भेज दिया, मैंने क्यों भेज दिया वो? नहीं, अब एक ग्रुप बना हुआ है यार, पूरा बहुत 6 महीने से चल रहा है वो काम। नहीं नहीं वो नहीं है, नहीं वो अलग है, मैं बताता हूँ। किशन जैफ। किशन भाई अगर मोमेंटो नहीं है ना तो मैं बनवा दूंगा, आप तो बस अभी जो मिल रहा है उसको दिखा के फिर आपको ये इसका मैंने नाम लिख दिए सब। भाई ने बनाया क्या? हाँ विद भाई नहीं लिया। अरे बहुत मेहनत हुई है यार, बहुत मेहनत हुई है। कर देंगे क्या अशोक? लास्ट वन अशोक कोडिया। कोई सिल्वर जुबली बैच से रह गया है हमारा कोई बैचमेट? ऑल सेट? देखिए बात अधूरी रह जाएगी अगर मातृशक्ति की बात नहीं करें। शमा, सुरभि, प्रीति, अनामिका, शालिनी, अनीता, सोनल, मीता, महिमा, सोनल बोडिया, ज्योति गौल, जस्सी भट्ट, अंजना, नीतू सिंह, नीलू सोनी एंड अंजू मित्तल, इन्होंने हमारा ही नहीं हमारे कॉलेज का, हमारी ब्रांच का नाम रोशन किया है। भाई इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं मेरी फैमिली में बता रहा हूँ, मेरी बिटिया जो अब इंजीनियर बन रही है उसमें इन सब लोगों का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हम मोटिवेट करते थे बचपन से इन्हीं लोगों का नाम ले लेके, और वो बड़ी खुश थी जब इन सब लोगों से मिली। तो इन हमारी मातृशक्ति के लिए भाई जोरदार एक बार जोरदार होना चाहिए। मेटलर्जी का एक ग्रुप फोटोग्राफ होना चाहिए, आइए प्लीज स्टेज के पास। नाउ राकेश बॉस ओवर टू यू, इसके बाद आप संभालना। इस ग्रुप फोटो के बाद हमारे छोटे भाई डॉक्टर नंद कुमार जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। इस ग्रुप फोटो के बाद डॉक्टर नंद कुमार जी, एसोसिएट डीन एलुमनाई अफेयर एंड एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर। Dr. Nand Kumar ji, Associate Dean, Alumni Affairs. Over to you, please. Good afternoon, everyone. Now the time has come for formal vote of thanks. It has been such an honor to be part of this wonderful occasion of our Institute Alumni Day. On behalf of Deanery Alumni Affairs, I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed dignitaries. I welcome the Golden Jubilee and Silver Jubilee batches along with their families and thanks them for their presence today. The event is being organized by collective efforts of Alumni Affairs, Alumni Association, faculty, staff and students.
it is my kind duty to extend the vote of thanks in acknowledgement of their efforts. I would like to extend a vote of thanks to Dr. R.K. Tyagi, the chairman of BOG MNIT Jaipur, for gracing the occasion, and our director, Professor N.P. Padi, for extending his wholehearted support and guidance in organizing this event. Our sincere thanks to Mr. T.S. Ranawat Bose, the convener Alumni Day, and Mr. Devraj Solanki, President Alumni Association, along with Mr. Rakesh Yadav, General Secretary, MNIT JA, and all the other office bearers of the Alumni Association for their active cooperation, support, and guidance through the preparation of the event. The alumni are the heart and soul of this event. Thank you very much for connecting and sharing your experiences and memories with us. You are the flag bearers of the institute. Special thanks to the batch coordinators, Engineer Gurudev Singh Son and Dr. Ashish Das Sharma for their contributions in organizing this event. Special thanks to Professor Rakesh Jain, the Dean International and Alumni Affairs, and Dr. Pawan Kalla, Associate Dean Estate. The event is the result of the synergy of the students, faculty coordinators, student coordinators, Mr. Neil, Mr. Siva, Mr. Krishna, and all members of ALCOM team and the Office of Dean PND. Once again, I wholeheartedly thanks all of you for making this event a great success. Have a nice evening ahead. Thank you. Thank you. Now all are invited for lunch at Vinodini Hostel.